Hello and welcome to the first day of our 10-day foundation program for the beginners in class 11. Hello and welcome once again to the 10-day foundation classes for the beginners in class 11. In these 10 days, in the morning time, we shall be getting the infrastructure in chemistry for building a great superstructure later on in our schools, in our coaching classes, or elsewhere. This is the motivation foundation program that we'll be having. We are joined by in the Zoom Ayushman Naik, Bismay Tripathy. Samsung, please change your name. You have to rename, and I must see who is there with me. Yes, Swayamjit Mahanti. So we have seen the last several years that this program caters to the need of aspirants who are hardworking and have a strong determination to achieve a particular goal, maybe an IIT engineering or maybe a medical in a top institution, AIMS, or a good institution, or either Niger, whatever. That and whatever we will do in the last 10 days, most of the things we have already done in our several programs in uranium. Those who are already with us in multiple online programs, for them this will be, today's program will be just a revision one, but that is very much required. I know for sure that all these have been completely vaporized, completely, volatilized from your memory cells, and a fresh revision is required so that we can go ahead with our entire 10 days program. And if you are new, if someone is new to the program, you will also benefit if you become little hardworking in these 10 days, because we'll be having at the most 2 hours program at the most. But the entire day is with you. The holidays are going on. I think some of you have started your coaching programs and all that. Now, let me tell you from the very beginning, you attend these 10-day classes, which will help you, which will benefit you in a huge scale. There will be no doubt about it. But if you want to take our help on a regular basis, for that, 2 things are required. First, you should have sufficient time. You join in some school which is integrated with coaching, so that your outing hours, going out of your home, say for example you are starting from home from 10 to 3:30, that's it. The schooling, coaching, everything included in that period. In that case, you should be advised to go ahead with individual coaching for your personal needs.
higher, to achieve your higher goals. Otherwise, it will be a futile exercise. I have seen many guys opt for a regular program after the 10 days, this 10 days program. Of course, that program is also free, but it has a lot of responsibilities, because give and take is always an inevitable requisite for a social educational life between teacher and taught, between children and parents, between friends. There will be always a give and take. So give is no financial, but give is a lot of mental and commitment, good manners, humility, and commitment. Last year, I may tell you that many guys attended the 10-day program that you will be attending, and we are now joined by Chinmay, Krishna Beura, Nihar Pani from, I think, Brahmapur. Nowadays, everyone is calling Brahmapur. Prabhasi Dixit, Pritam Sadangi, Sravani, Sakti, and the unknown. Please write your name. Don't remain anonymous, because I might ask you to open your video. Yeah. Those who will be joining in Zoom, maybe sometime when I will interact, I will ask you questions, or you will ask me questions. Both the way. You will ask me questions and I will also ask you questions. So that is advantage in Zoom. You can, a teacher can see the taught. When there is an eye-to-eye contact, then that will be more rewarding experience. Of course, those who are watching directly in the YouTube, very much a warm welcome to them. You can as well take the benefit from direct live streaming or watching it later at a convenient time. Yes, I'll be using mostly the language of English for communication, because you guys, I know, hail from Odia medium background, you are not very familiar with listening to English, but this is the first occasion perhaps you'll be listening to me in English. Of course, I will not be very fast, I'll be slow, so that you can have an idea as to how you can improve your listening skills, talking skills, because in this 11 and 12, you are not under Board of Secondary Education. You'll be under CHSE, Council, or CBSE, or at the most ICSE. Those are all, the communication is English. And above all, you will be entering into professional lives. So you should get a proper training to enter into the professional lives, being a doctor, being an engineer, being a leader. So these things need a good communication, particularly in an international language, English. Not because you guys who have joined my uranium, camps, online programs, you must be knowing how rustic I am in communicating in Odia. That can be done, that will be done also today, to add a little spice, to make our program a little spicy. You guys, when you were kids, you were telling to your moms or dad who was looking after your
your meals. Daddy, mommy, this is spicy, but now you have started loving spicy things because you were almost in the threshold of becoming adult. I mean, not adult, but in the process of making the adulthood. So yes, Dinabandhu Senapati, yes, if you are a student, good morning to you. If you are a parent or a teacher, you can watch us how we are doing. You can advise us what more we can do. Chinmay, maybe Pranam, maybe you are from Rutapalli. Okay. What we'll be doing, Anil sir, namaskar. You are the first person to encourage us for all our activities from Brahmapur area. So God bless you. And you are a very successful teacher, a great teacher in science in Brahmapur and adjoining areas. So keep it up. Now, in these 10 days, we shall be doing the basics, where you will get a confidence, a great conviction that yes, chemistry, I can just, win over any kind of intricacies that will come in my way. It's easy. So nothing to worry about. You can do of yourself without anybody's help in the age of AI, chat GPT, and a lot of internet explosion. So knowledge is freely available, but yes, you need a guide. No doubt at this stage, you definitely need a guide. Otherwise, it's not possible. So let's see, after 10 days, last year, maybe 4 or 5 guys, they remained for a continuous program, out of whom, some guys are really very hardworking, but they could not, they themselves are convinced that they are not suitable for our program. Please switch off your, Sriyani, please switch off you put off your microphone, please. Whenever it will be required, I will ask you and you will open your mic and ask me questions or answer my questions. We are joined by Abhilipsa Patra and many others. Yeah, we'll be doing the basics, what we call the language of chemistry in an advanced level, where you develop familiarity with writing equations, balancing them, and studying them, how and why it is happening, and the mole concept, which is very, very important, and the related stoichiometry calculation, and related things like the gas laws, which are important, not the gaseous state I am talking of in physical chemistry, because a lot of stoichiometry problems is based on gas. Unless you have a clear concept of gaseous state, particularly how the volume and the number of moles are related when temperature and pressure remain constant. So, and then an idea about atomic mass, molecular mass, and maybe equivalent mass, which is now a redundant subject. Nobody in the West is keen to understand, I mean, to study the equivalent concept, which was very popular in our time. Nowadays, mole is the supreme. Mole is the king. To solve any problem on the basis of mole has been the supreme. And that mole concept and related stoichiometry calculation, most importantly,
the calculation based on solution. When you are handling a solution, adding one with the other, or you are adding a solid, you are analyzing a mineral, an ore, to know what is the percentage of purity. You are doing a lot of chain, what we call a series of reactions, successive reactions you are doing. First reaction, and then take the product for the second reaction, take the product of the second reaction to take it to the third reaction, and ultimately you are able to analyze how much of a pure metal or an element is present in that ore or mineral. So these analysis involves solution. For learning to handle problems and solution, you need to know the different ways to express the concentration of a solution, like molarity, molality, W by W percent, W by V percent, V by V percent, mole fraction, all these things, ppm, ppb. So these things, along with the problems based on titration, volumetric analysis, which is really a subject which is avoided by many students, not all. But that is an interesting topic. Once you are acquainted with all this, then I think chemistry will be very, very interesting. So let's start. So I will be now, please raise your hands, your yellow hands. You know how to raise hands in Zoom to make me feel confident that what I am saying so far. No. Swamjit, don't raise your hand. Listen to my question first. What I have been talking for the last 15 minutes or little more. Yeah, little more. 17 minutes. You are able to understand. I'm talking in English. You are able to understand every word that I'm throwing to the air. There is no difficulty. Raise your hands, please, who are able to understand what I am speaking. Don't worry. If some of you are feeling little uncomfortable in listening in a foreign language, English, don't worry. When we come to the technical session, then I will be writing, you will be writing. You should have a copy, maybe a fresh copy for the 10 days program, which you will continue wherever you go, in whichever coaching you join. So we are not keen on that. We are keen to motivate you for a meaningful chemistry. Not career. We will not be so, selfish to say to take chemistry as your career. No. Whatever you choose as your career, chemistry comes definitely with a medical or IIT or a research scientist. You have to have a good chemistry background in +2 level, 11 and 12. That you have to ensure. Yes, one of the uranium awardees has been in the last year your elder brother, Rudra. His name is Rudra. Narayan Sahu. Narayan. Yes, Narayan Sahu. He is from a remote area in Dhenkanal district, Bhuban. Bhuban is known for, every now and then. Now the frequency has reduced. Every week, particularly in the summer days, the entire village, a large portion of the village will burn in fire, catches fire. A lot of damage occurs. So the village Bhuban is known for
catching fire and damaging a lot of property due to fire. So from there, one guy is able to sustain with me. Of course, others are there with request. They are good, they are humble, but they are not able to, provide that kind of commitment. What is needed, Sriyani and others, Pritam and others, what is needed for a continuous guru chela relationship, sagird, or what we say in Urdu parlance, sagird is sister, or and then the teacher is, who can tell me? What is the Urdu? Okay, I'm forgetting that. Ustad and Sagird. So that relationship is being maintained by only one, because you have to motivate. The student has to motivate a teacher. Nowadays, in the age of professional, commercial, educational system, where commerce has invaded every nook and corner of our society, including education, commerce, you understand. In that, nobody bothers whether you understand or not. And only you are asked to do and not ask many questions. So, in our kind of program, mutual motivation is required. Since this will be a free program throughout, I would definitely ensure that you are motivating me. You are, solving the homework that I used to give, not much. And you are also asking your doubts from the level of your questions that you are asking to me. From that, it will be evident, it will be known to us that in what level you are preparing this subject. And you will find in what level we will be delivering this subject. You will find. And accordingly, you have to also prepare. And it will be absolutely impossible if you take individual coaching elsewhere and also take our help, my help. It is impossible. You will yourself discover that this teacher is not meant for me. It's not meant for me. But if you depend on us and you have a large time at home, you give a selected hours of time, maybe 10 to 4 or 10 to 3, as Rudra is giving. He has ample time. I can have class at any time. Maybe at 9 p.m. sometimes we can sit. Supposing I could not take a class in the evening, I can take a class at 9 or early morning 5 o'clock, because he is free. He has his coaching come school, only coaching, because that school is integrating coaching only. The coaching is taking, but still, despite coaching, he is totally dependent on us, and he is also reciprocating whatever. Also, he is being reprimanded sometimes. Any student, defaulting to comply the homework will be definitely reprimanded by the teacher, and he or she has to take it very sportively, seriously, and do the needful. Okay, with this much of introduction, let us share our screen so that you can see our screen. But at the same time, I will
disable annotation. You cannot write in our screen unless and otherwise I will ask for it. So let us start a separate page for you. This is XI 2025 Foundation 10-day PRG program. Okay, this is facing some problem. Will not waste our time. Maybe some other, yeah. Okay, we'll start from here. Now, the first thing that we will be doing, you can take your copies and a pen. The first thing that we'll be doing, of course, for guys like Bisma Tripathy and some others, maybe those who are watching from the YouTube and already joined our previous online programs, like the guys from Rutapalli Vidyapitha, they will find this, the initial program, definitely a kind of revision. Now, first thing we shall see how to writing ionic equations. For that, you have to know the solubility rule, remember the solubility rule, because most of the reactions take place in aqueous solution, in water. So let me revise, those guys like Sriyani and others who are joining for the first time, doesn't matter which compounds, I mean inorganic compounds mostly, are soluble in water. Just like, barium chloride, if you add a little bit of barium chloride or sodium chloride, your common salt, in water and stir it for some time, then it will vanish. It will dissolve, forming a homogeneous solution. But if you add a little bit of silver chloride and stir for a day, 1 day, you will not find any change has happened. If you leave for some time, it will settle down and you will feel nothing has happened. Later on, when you grow with chemical science, you will know a very minuscule part, a very negligible part, but yes, some part of the substance does dissolve, but that is not at all detectable. We say it is insoluble. For beginners, it is insoluble, but for later, we will be using the term sparingly soluble. Insoluble term is a misnomer, doesn't mean anything for class 11 and 12 students. What we say insoluble before class 10, before class 11, in class 8, 9, 10, some substance is insoluble in water, doesn't dissolve. And some soluble easily dissolves. That is soluble, this is insoluble. So here we shall be using the term sparingly soluble for the so-called insoluble substances. Silver chloride is so-called insoluble or truly sparingly soluble. Khiro Chandra Nas, namaskar sir. Apan jodi student tebe namaskar. Apan jodi teacher kimba guardian tebe bhi namaskar. Well, don't worry. If we, today is an international Pokhara Divasa, who knows today is the Pokhara Divas that we have been celebrating for long years. Raise your hands, please. Some guys in US, ironically, guys
staying in other countries like US, UK, Australia, and others, developed countries, they are more Odias. The Odisha culture is more nourished and cherished by them than us. You will know when you go and you would like to settle there in a Western country or in a developed nation, you will find if you like, of course, there are some few, they are integrating with Western culture, they no longer want to identify as Odia. So those cases are rare, but majority, they want to continue with their Odisha culture, heritage, even if they are there in Western countries or in developed nation. अरे विष्णुप्रिया नाथ अरे कौन तुम कौच कौन तुम विष्णुप्रिया तुम्हें क्षीरोचंद्र नाथ हो गल तो मु जानी पारलिनी मु दो चिन्ह हेली सो आमे सॉल्युबिलिटी रूल्स मने पके दबा एटा मु सब फाइल शेयर करिवि सो नथिंग टू वरी अबाउट एंड डोंट वरी आई विल नॉट रिग्रेट टू स्पीक इन ओडिया आई एम एज प्राउड टू बी एन ओडिया born in Odisha, so Odia. Forget about my roots. My ancestors in 10 generations before, as I am told, they have migrated from Kanauj, UP as Pandits. Nonna mo Brahmana nonna. Kariya pai gude Kanauj ru gude Brahmana Odisha Raja jeteବେଳେ thile seteବେଳେ ସବୁ ଆଣିଥିଲେ and our ancestors they came for becoming pandits to the kings, and we are and of course after so many generations here we are now Odias. So every language is sweet and we are proud of learning more and more languages, right? So तुमे घरे लिखिबो soluble को माने soluble all acids, inorganic acids. I'm not talking of organic acids. Hydrochloric acid hela, sulfuric acid, nitric acid. Eta hala. Second hochi all alkali metal ions. Alkali metals माने क्षार धातु. Group 1. तार सबुतक salt. Sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, and also largely lithium. Lithium रा solubility टिके कम, but soluble. Ammonium salts also. Ammonium is not an alkali metal ion, they are made up of non-metals, but still all ammonium salts are soluble. All nitrates are soluble, irrespective of the positive ions they have. All chlorates and perchlorates are soluble, all, no exception. All acetates are soluble, but not all sulfates are soluble. All sulfates soluble except strontium, barium, from group 2, lead in the P block, mercurous and mercuric both, and silver. These sulfates are so-called insoluble. All chloride, bromide, iodide salts are soluble except silver, mercurous, not mercuric, mercurous, silver, lead, cuprous, and thallium. Forget about thallium now at this moment. So this is the most important thing that you remember. And insoluble category, all fluorides are insoluble except the alkali metal fluorides, which are soluble. Beryllium from group 2, fluoride is soluble. Silver, thallium, ammonium fluorides are soluble. All oxides and hydroxides are insoluble. When I say insoluble, I really mean sparingly soluble. And exception is alkali metal oxides and hydroxides, they are soluble, as well as alkaline earth metal oxides and hydroxides, excepting beryllium and magnesium, calcium, strontium, and barium hydroxides. Soluble. Radium is a radioactive element. Who bothers? Who cares radium? Thallium, yes, in the P block, ammonium, these oxides and hydroxides are soluble. Carbonate salts, sulfite, phosphate, not sulfate. Sulfates are soluble, yeah. Sulfides, phosphates, arsenates, chromates, all these salts are insoluble except alkali metal salts of this time, of these anions, and beryllium, magnesium from alkaline earth metals.
alkaline earth metal, and ammonium. Their salts of these anions are soluble. So with this, let us take up now to revise, because I will be giving you a foundation course for the coming 10 days. If you will be regular, I'll be devising, I will be planning things that even a newcomer will be comfortable. Otherwise, if I would have taken only the uranium awardees like Chinmay, Vishnupriya, and Bismay, and some others like Swayamjit, I would have adopted a different strategy. But I have opened this to all, including those who will be watching in the YouTube directly or later. And all these files will be made available in our website. If www, that is of course common. Nobody nowadays saying www. It's ridiculous. Theuranium.in. You may not also type www. Only theuranium no gap.in automatically will be appearing. We means the website will be appearing, and there you will find even the video that is going on is being live streamed. There in the description box we will be uploading the related files for others to download. But those who are in the group for the Zoom program, I will also attach the files in the group, WhatsApp group. Never mind. I am available for those who are watching in the YouTube. You can write to me for your queries, doubts. You can find my email ID or my WhatsApp ID from our website. You can write to me. And we will be, of course, all sulfides are insoluble except same alkali and alkaline earth metal sulfides. Of course, ammonium is omnipresent everywhere. The ammonium salts are soluble. Silver, this is a superfluous thing. Silver, mercurous, and lead salts are insoluble except acetates and nitrates, because here in the soluble category, all acetates are soluble, all nitrates are soluble. So here, this is the repetition. All silver, mercurous, lead salts are insoluble except acetate and nitrate salts, which are soluble. All metals are solids. They are not soluble metals. And except mercury is a liquid. And among mercuric chloride is soluble. But bromide and iodide, they are insoluble. So all these will be given to you. And while writing an equation correctly, 100% correctly, in aqueous solution, something is going on, you have to put a word ac. This represents the substance is soluble in water, and they will undergo ionization to form the positive ion and negative ion. This is Na plus and Cl minus. You can split them into ions if it is soluble, and you write a word ac for them. Silver nitrate is soluble, ac. And this is a precipitate due to double displacement. Dvaita visthapana or dui visthapana प्रतिक्रियारू एटा जो अवक्षेप हला अवक्षेप तमे भारी खुशी लागियो म तो ओडिया रे कहबी तमे भारी मजा लागियो तुम I know for sure, because most of you of course there are some CBSE guys who are watching, who will be watching. I must also make justice to them, because this is an open 10-day program, not restricted to uranium awardees. So to make sure that you are really committed and you might be interested for a regular program, to take our help regularly, so that this is a mutual program, although no finance is involved, but some other things are involved. Your commitment, and your passion, that is the, Guru Dakshina for us. And humility and your response, all these things. So you have to write S. S stands for solid. If something is insoluble, coming as a precipitate, you write S. And sodium nitrate, all nitrates are soluble, so AC. All chloride, bromide, iodide salts are insoluble,
I mean soluble, I'm sorry, soluble except silver, mercury, and lead. So silver chloride, is insoluble. So S. Similarly, when you add calcium carbonate solid with some acid, all inorganic acids are soluble. So AC. Calcium carbonate, all, here, all carbonates, don't write anything. You'll be given the file. All carbonates are insoluble, except, sodium, potassium, not alkaline earth metals. Among alkaline earth metals, only beryllium carbonate, magnesium carbonate are soluble, not all. All written, you have to. So you have to mention in this program, calcium carbonate solid is insoluble, HCl, AC. Then you get carbon dioxide, bubbles of carbon dioxide gas will come out. Water is a liquid. Remember, H2O is always L. L stands for liquid, and all chloride, bromide, iodides are soluble. So calcium chloride is AC. So with this, I think we will take up to revise any equation. Say we are taking permanganate plus sulfuric acid dilute plus, say, hydrogen peroxide, giving you K2SO4 plus MnSO4. Now you write what I am writing, plus now this is simply we are trying to find the ionic equation and the ionic equation, because this topic that I have written on the top is writing ionic equations, nothing else. For that, we have to apply the solubility rule. Potassium, all potassium salts, rule number two, all alkali metal salts are soluble, irrespective of the negative part. Here, I will presume that you should be good at writing formula. That we won't do here. In the 10-day program, you have to practice writing formula. Valency, some cases variable valency, Chalojojjota, ferrospheric, +2 +3, cuprous, cupric. Nowadays, nobody is saying osmic. So the stock notation that have come up in the recent years that gives the valency or oxidation state in Roman. For example, we say iron 2 sulfate. Earlier, we were saying ferrous sulfate. Now we say iron 2. ଆହୁରି ସୁବିଧା ହେଇଗଲା ପିଲାଙ୍କୁ, କୋଉଟା 2 3 କୋଉଟା 1 3 କୋଉଟା 2 4 ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆହୁରି ସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଇରନ୍ 2 ସଲଫେଟ୍ ମାନେ ଆମେ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍, Fe2+ ସଲଫେଟ୍ 2- 2 2 କଟିଗଲା, ବ୍ରାକେଟ୍ ଉଠିଗଲା, ସୋ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ଆଇରନ୍ 2। ସୋ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଫେରିକ୍ ସଲଫେଟ୍, ଆମେ ଆଜିକାଲି କହୁଛୁ ଆଇରନ୍ 3 ସଲଫେଟ୍, ଆହୁରି ଭଲ ହେଲା। So just I'm reminding you how you can write the formula, and I will give you the file for those who are new to practice write correct formula and acquaint themselves with a large number of particularly negative ions, chromate, dichromate, dihydrogen phosphate, peroxy disulfate, so many things you have to familiarize, not mug up. Ghosa nahi. So I would have spent some time in telling you the different negative ions. Particularly, there are vast number of composite negative ions, polyatomic negative ions like permanganate, manganate, chromate, dichromate, metaluminate or simply aluminate, zincate, chromate, chromite, plumbate, plumbite, stannite, stannate, peroxide, superoxide, hydroxide, perchlorate, chlorate, chlorite, hypochlorite. So all these things you have to familiarize. I will give you the file from where those who are little they're new to the field, they will familiarize, no doubt. Okay, then we, with our knowledge of
solubility rule, we will write AC, because all potassium salts are soluble. All inorganic acids are soluble AC. Hydrogen peroxide is a liquid, just like water. These are the two, and bromine is a liquid. There are very few which are liquids. So remember, water, liquid, hydrogen peroxide, liquid. And then potassium sulfate is AC, because all potassium salts are soluble. All sulfates are soluble, except I told you that strontium, barium, lead, mercury, and silver. We will not use that. You can use all potassium salts are soluble. All here, you have to say all sulfates are soluble, except those exceptions do not contain manganese. This is manganese 2. What we were saying, manganous. And oxygen is a G. G stands for gas. This is AC. And water is a liquid. So after designating in the aqueous solution which one is soluble, giving the symbol AC, and which one is a liquid, L, which one is a gas, G, which one is an insoluble substance, S, solid, we start converting to the positive and negative ion, K plus, this is MnO4 minus. Because MnO4 minus is one entity. Manganese and oxygen, they are bonded by covalent bonding. They will not separate into Mn7 plus and O2 minus. No. Permanganate ion is one entity. It's a giant entity. It's a big fat man, fat O-man with a -1 charge, and K plus having +1 charge. This is one loss of electron, and this is one gain of electron. And then we convert sulfuric acid to H plus, SO4 2 minus. Don't write 2. We are not balancing. After some time, we'll be revising the balancing techniques. And those who were with me will be very, very pleased. They will not be unhappy. They will be happy for revision, because during this time, everything has volatilized out, because we were very keen in our board examination. So we are not balancing. Simply write the positive ion and negative ion which got this symbol AC. Hydrogen peroxide, you have to do nothing, because this is liquid. So let me not write anything, because I know liquid, gas, and solid, they will not be converted to ions. They will be written as such. Now put an arrow mark, and then you split into ions. This is AC, K plus, and not 2K plus. Forget about balancing now. Plus MnSO4, Mn2 plus SO4 2 minus. And gas, you need to do nothing, simply O2. And water, liquid, you have to do nothing. So this is what we call the total ionic equation. Those who are from CBSE background, will not face any difficulty, because you are from Odisha soil. So you should not have any, kind of hatred. That is a very tough word for me. Dislikeness for Odia, speaking Odia, and listening to Odia. Because we are also proud that we are born, or we are working, we are staying in a place called Odisha, where Odia is the language of the soil. Right? Now I'm a kon kariba, joda common achi, joda kati daba. Prathame ame kati daba. Sulfate epote achi, sepote achi. E3 gote thau, eti 5ta thau. Because sulfate ro kichi change heini. So those are called spectator ions. Cancel the spectators. Ame jodi balance kari thantu, Sriyani, tebe definitely sulfate sankhya saman hei thant. Ame balancing kari nu e porjanta. Ame balancing how tike pore sikhiba. So ame tike mundore buddhi apply karikri. देखिए सल्फेट आयन रो किछि चेंज हेइनी चेंज हेइथिले आ गुटे कोन हेइथांता SO2 व्हिच इज अ डिफरेंट स्पीशीज ऑल टुगेदर कि S सल्फर कि कोन कि सेही सल्फेट अछि माने तार किछि चेंज हेइनी काटी के उड़ा था सल्फेट एटी गोटे काटिली एटी दीटा काटिली पांचटा थिले भी काटता बिकॉज़ वी आर नॉट बैलेंसिंग K+ एटी अछि सेटी अछि काट
किंतु मैंगनीज काटी परिबनी कारण मैंगनीज रे एठी जंतुटी अलगा परमैंगनेट मोटा मोटा आयन एंड एठी मैंगनीज 2+ इट इज ए पतला आयन गोटी ऑक्सीजन को काटी परिबनी ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन पेरोक्साइड सो कटि गला परे बाकी जोटा रहिले प्लेयर से हला शुभमन शुभमन गिल ଆଉ କଣ ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଟା କିଏ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦେନ୍ ଆସିଲା କିଏ ନା ବିରାଟ କୋହଲି ସେଇମାନେ ଧରା ପଡିଯିବେ କିଏ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିରାଟ କୋହଲି କିଏ ରୋହିତ ଶର୍ମା କିଏ परमैंगनेट आयन गोटे प्लेयर H+ आयन गोटे प्लेयर हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ गोटे प्लेयर एंड प्रोडक्ट रे किए ना Mn2+ गोटे प्लेयर ऑक्सीजन गोटे प्लेयर एंड वाटर गोटे प्लेयर आउ अन्य गुड़ाक सब बेकारिया तुम मो भलिया दर्शक just watching the game going on no contribution to the game of cricket or game of football whatever so eight as hela you must at this foundation course you must be very strong in writing ionic equation because in the whole of the 2 years in inorganic chemistry whenever you find you are given ionic equations so unless you are confident it is very difficult for you to be thorough in inorganic chemistry which guys they neglect now this is not balanced of course this is permanganate ion this is called the net ionic equation where you get the players of the chemical reaction these are the 3 players and this is the India wins the ICC champions trophy those are the product net ionic equation whenever I say ionic equation it means the net ionic equation now a task for you you find out I give you some time I'll not go anywhere zinc metal treated with say dilute nitric acid to give you zinc nitrate nitrous oxide N2O and water nitrous the laughing gas or we can call it nitrogen 1 oxide will be very soon discussing oxidation number and the paradoxical cases very soon so first of all you give S AC LZ symbol and then split into ions those which need splitting only where you put AC they need to be split into ions yes so during this time यूं गया यूं आया आप कहीं मत जाइए if you are watching in video I mean in YouTube video then also don't go anywhere ask your mommy daddy to give some food to eat because I am not watching you are watching me it will be discourteous if I eat something so I am going clandestinely to eat a banana
Sorry, guys. I'm sorry. So not only I took a banana, but also I answered the call of nature, the first call of nature, because I'm in a habit of drinking a liter of water in the morning. So nature has to give very a strong call. Unless you answer, I think you have to face catastrophic consequences on this spot. You understand what I say? Okay. Raise your hands who have completed writing down the ionic equation. When I say ionic equation, I definitely mean the net ionic equation. The only Swayamjit and Bisma, our old uranium awardees, they could complete. C. Others C. I think Vishnupriya, you must have completed. You must also mention if you are following, continuously sitting in a table and chair or in any place for another 1 hour is there. So then you also interact with me in the chart box. Zinc is a solid because all metals are solid excepting mercury. Nitric acid is an inorganic acid, so all inorganic acids are soluble. All nitrates are soluble. N2O is a gas. I have been telling it is a gas, and H2O is a liquid. And H2O is a liquid L. Are you able to see my screen? Raise your hands all, Pritam, Shravani, Sakti, Shivani, Sriyani. Are you able to see my screen? खाली हाथ टेक को माने मो स्क्रीन देखि पारुछ. ओके. ताले समस्ते मोर स्क्रीन देखि पारुछ. That is okay. Otherwise मु बापो पुओ राति निद्रा मु चलेछि देखल स्क्रीन देखि पारुन. सेई टाइप रो सिचुएशन हो. ओके, हैंड्स डाउन. केवल जो माने करिछ हाथ टेक. देखो, it has a liquid, water is a liquid, so zinc को हमें किछि करि परिवानी, एटा सॉलिड टा. नाइट्रिक एसिड को भांगिबा H+ + NO3- आउ जिंक नाइट्रेट को भांगिबा Zn2+ कारण तार वैलेंसी इज 2+, एंड 2 नाइट्रेट हमें लिखिबा कथा. 2 लिखिबानी कारण हमें बैलेंसिंग करूनी, प्लस खाली नाइट्रेट लिखुचे, प्लस N2O हमें किछि करि परिवानी, इट्स अ गैस. वाटर को हमें किछि करि परिवानी, इट्स अ लिक्विड. So this is our total ionic equation. तो आमे प्रथमे, unless शक्ति स्वरूप सतपथी तमे जॉइन करलनी एठी सेठी जॉइन करछ, don't worry, you can join either in Zoom or directly you can watch in the YouTube. If you watch in the Zoom, if you are a student, then you are allowed. Then, but you have to be very vigilant because you might be wanted to answer some questions. तुमे भी मते प्रश्न पचारिबो, आसीबो समय आसीजो वर्तमान. सो आमे कोन करिबा, नाइट्रेट को काटी दबा. आमे एपटे सेपटे अछि, दी पटे अछि, काटी दबा सिना, किंतु हमकु गोटे खाली खाली लागिबो. कोन खाली खाली ना, N2 जो लाफिंग गैस ता आसी जोथरे नाइट्रोजन अछि, से आसला कुआडू तार जननी किए, जननी होछि सेही नाइट्रेट आया. तेणु जोटा को आमे काटी देइथिले सेटा को पुणी आउ थरे पुणी कॉपी कर दबा.
तबे प्रश्न उठुची राइट साइड रे काई काटिले तार कारण है राइट साइड रे हमर हीरो मार्का N2O अछि आउ जो नाइट्रेट आयन अच्छी सेटा आउ कि धर एठी 10 नाइट्रेट आयन रु दीटा नाइट्रेट आयन रु N2O बाहरला गोटे N2O बाहरला बाकी 8 नाइट्रेट आयन एपटे 8 नाइट्रेट आयन कटि गले सो एपटे नाइट्रेट आयन स्पेक्टाटर थिला एवं हीरो मार्का भी थिला कोहली भी थिला किंतु एपटे नाइट्रेट आयन खाली दर्शक एपटे नाइट्रेट आयन कोहली भी थिला एवं 8टा दर मु कहूची कथा को 8टा थिला दर्शक तम आम भलिया एपटे भी 8टा थिला दर्शक कटिगले किंतु जो दीटा रहिला हीरो कोहली से देले N2O एथरे दी गोटे नाइट्रोजन अछि दीटा नाइट्रेट रु गोटे N2O मॉलिक्यूल बाहरिबो दैट इज व्हाई तुमको लागिबो गोटे केमती फांका फांका अरे एपटे N2O अछि एपटे गोटे कंपाउंड अछि तार काउंटर पार्ट नाही एटी ये बात कुछ हजम नहीं हुआ तेन हजमला खाइबो तबे हजम करियो को देखला देखि दम सो तापरे तक कला परे मु तुमको देबी किछि कौन करिया पे ना प्रैक्टिस करिया पे किंतु एबे पढ़िबा कोन ऑक्सीडेशन नंबर कांसेप्ट मु सब नोट्स दे देबी किंतु हमर एटी प्रैक्टिस होच मोस्ट इंपोर्टेंट बुझी देबी आउ देखो आजिकली वैलेंसी वर्ड टा उठी गला everyone is speaking oxidation state when you are carrying out a chemical reaction सेतेबेले आमे कहू ऑक्सीडेशन नंबर आर एतेरु एते चेंज हला एतेरु एतिके खसिला एतिके एतिके बढ़िला किंतु यूजुअली जदी किछि रिएक्शन नाही ऑक्सीडेशन नंबर जगह रे आमे ऑक्सीडेशन स्टेट कहू अरे ए कंपाउंड रे ए अमुक एटम रो ऑक्सीडेशन स्टेट ता केते सेठी ऑक्सीडेशन नंबर न कहि कि ऑक्सीडेशन स्टेट कहू so you can interchangeably use the terms oxidation state and oxidation number they mean the same thing but oxidation state is often used when there is no reaction often I'm not saying you cannot use oxidation number you can use both for every purpose now in ionic compounds like NaCl Na+1 and Cl1 minus okay these are electrovalency ionic valency but what about sodium sulfate which has 2 sodium ions and 1 elephant like sulfate ion so in this this sulfate ion is a covalent ion in this the atoms are bonded by covalent bonding supposing I show you the bond structure of sulfate ion one of the bond structures of sulfate ion you will find sulfur is the central atom and all the 4 oxygen atoms are bonded by by covalent bonding means mutual sharing tu electron gote de mu gote electron douch so ame dita to electron hochi gote share pair so the pair of electron will be shared equally by both or maybe unequally by both but it will be shared किंतु एटी पूरा आयन पूरा ये अलगा ही गला with one loss of electron and here one gain of electron एटी अलगा हलानी सल्फेट हाथी जुआडे सल्फर गला चारटा ऑक्सीजन ता चारिपटे घेरी हेगिरी गले सो आमे जदि कहिबा ए सल्फर रो जोज्यता बा ऑक्सीडेशन बा वैलेंसी केते सेटा जानिया पई कोवैलेंट मॉलिक्यूल हो कि कोवैलेंट आयन हो इंडिविजुअल एटम रो जोज्यता केते बा वैलेंसी केते से गुडा को गोटिए टर्म रे प्रकाश करा गला दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट बा ऑक्सीडेशन नंबर सेटा बोथ आयोनिक वैलेंसी पई व्यवहार होई परला एवं कोवैलेंट मॉलिक्यूल किबा कोवैलेंट आयन रे इंडिविजुअल एटम पई व्यवहार होई परला राइट सो ता माने ऑक्सीडेशन नंबर रो डेफिनेशन हला जे गुटे कोवैलेंट स्पीशीज रु तार जन्म धर कार्बन डाइऑक्साइड ता स्ट्रक्चर एटा ए स्ट्रक्चर रे जदि सबुडा को कोवैलेंट बॉन्ड भांगी जीवो एमिति भांगीबो जे ऑल दी इलेक्ट्रॉन पेयर्स गोटे डैश रे दीटा इलेक्ट्रॉन अछि आर गोटे तार गोटे यार गोटे तार गोटे यार गोटे तार गोटे यार गोटे तार गोटे तो ऑक्सीडेशन नंबर रो कांसेप्ट हला जदि
काल्पनिक भावे हाइपोथेटिकली इमेजिन करो जे सबुडाक बॉन्ड भांगी गला so that all the pairs are transferred to one atom which is more electronegative जार विद्युत विजुक्तात्मकता बा इलेक्ट्रॉन टाणीबार टेंडेंसी अधिका ताको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जार अधिका सेही एटम को सबुतक इलेक्ट्रॉन जीवो सो ए दुटा इलेक्ट्रॉन एटिकी जीवो 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 मने मने भाबो जदि मानको भितरे कळी हैला से कहले ना 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 आमे अलगा ही जीवा जदी एवं कोन केमिति अलगा हबा ना जोरजार मूलक तार जार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिका से सब निजर भी नब परर भी नब फल रे कार्बन निजर केतेटा इलेक्ट्रॉन हरेलानी श्रेयानी कैन यू टेल मी open your can you get 2 to 3 pieces of biscuit and never ever pronounce the word biscuit as biscuit. Remember this is the wrong pronunciation that many Indians they do by pronouncing biscuit as a biscuit. Its spelling is CUIT, but its pronunciation is not biscuit. Biscuit. It might appear funny, weird to some of you now, but you try to practice. Mommy, give me some biscuits, not biscuit. Yes, what I was saying, carbon श्रेणी केतेटा इलेक्ट्रॉन हरेलानी निजर श्रेणी अच्छी ना गलेनी श्रेणी गुड बाय करी गलेनी ठीक अच्छी आमे समस्त को चांस आमे दौचे किंतु तमर गोटे कमिटमेंट दरकार पैशन दरकार आम सांगरे बरकरार रहिबा पाई के कहि परिबो प्रवासी कहलो प्रवासी केतटा इलेक्ट्रॉन कार्बन हरेला ए जो काल्पनिक भाबरे सबुतक बॉन्ड भांगी गला तार केतटा इलेक्ट्रॉन कार्बन हरेला शक्ति स्वरूप जो देखुछ बाहर लेखुनो चार्ट बॉक्स रे प्रवासी देखुनो कि प्रवासी प्रीतम गोटे कोवलेंट बॉन्ड रे आर गोटे तार गोटे कार्बन एठी दीटा एपटे दीटा सेपटे दीटा तो चारिटा इलेक्ट्रॉन हरेला तेणु जतिटा इलेक्ट्रॉन हरेबो काल्पनिक भावे हो पछे सेटिक तार ऑक्सीडेशन +4 तो कार्बन रो ऑक्सीडेशन नंबर बा ऑक्सीडेशन स्टेट होची +4 एवं प्रति ऑक्सीजन रो -2 कारण निजर इलेक्ट्रॉन फेरी पाइले कोनोसी चार्ज डेवलप हुएनी अन्यर इलेक्ट्रॉन पाइले -1 जतिटा इलेक्ट्रॉन पाइला सेतिक माइनस एवं निजर जतिक इलेक्ट्रॉन हरिबो सेतिक प्लस so every oxygen will be having -2 so oxidation number of each oxygen is -2 and carbon होची +4 सेमिति जदि धर क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड अच्छी निज निज भितरे ऑक्सीजन ऑक्सीजन धर अच्छी नाइट्रोजन नाइट्रोजन धर अच्छी तांकर ऑक्सीडेशन नंबर केते किए पचारिला 0 कारण तू तो जीए मु तो सी तेणु तू जीवरे हाड़ ना मो इलेक्ट्रॉन मु तते दे देबी बा तू मते देबू ना तो जेजा जेजा इलेक्ट्रॉन तू ने मु नौची मोर तेणु 0 सो सेति पई रूल होची कोन एलिमेंटरी स्पेसीज रे मौलिक अवस्था रे जदि रहिबो सेटा डायटॉमिक हो ट्रायटॉमिक हो दुई परमाणु त्रिपरमाणु ओजोन हो S4 हो P4 हो सबु परमाणु रो ऑक्सीडेशन नंबर 0 मौलिक अवस्था रे रहिले किंबा जो एटॉमिक स्टेट रे हमें एक्सप्रेस करू लाइक Zn लाइक कॉपर जो एटॉमिक स्टेट रे हमें एक्सप्रेस करू जदियो ए मेटल गुडा को के एटॉमिक स्टेट रे नथांती से माने गोटे जालक सृष्टि करी करी ए जाइगेंटिक नेटवर्क रे समान थांती बट ताको रिप्रेजेंट करू तार एटॉमिक सिंबल रे जो गैस ऑक्सीजन हो क्लोरीन हो एवडा सब ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गोटे रूल हला
ऑक्सीजन रो सब बेले -2 एक्सेप्शन किए कहि परिबो व्यतिक्रम पेरोक्साइड रे -1 O2 2 -1 सुपर ऑक्साइड रे O2 सिंगल -हाफ ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड रे +2 जो ऑक्सीजन नौथिला से बर्तमान दब देखो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड रो स्ट्रक्चर एटा फ्लोरीन टा ऑक्सीजन ठारू मध्य मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तेणु दीटा इलेक्ट्रॉन ये एटिकी जीवो एटिकी जीवो सो ऑक्सीजन तार दीटा इलेक्ट्रॉन हरैलानी जे नेता बनिथिला से दाता बनिबो नेता माने जे नौथिला से दब तेणु देला माने +2 दीटा इलेक्ट्रॉन हरैला माने +2 गोटे इलेक्ट्रॉन प्रति फ्लोरीन गोटे इलेक्ट्रॉन गेन कला माने -1 शक्ति स्वरूप सेठी लिखलेनी 4 देखनी बाबा मैं लिख +4 ऑक्सीडेशन नंबर रे साइन रहिबो किछि नथिले सेटा प्लस मु बुझुची किंतु प्लस लिखिबो पड़िबो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू पुट ए साइन प्लस और माइनस हेलो आगु तो अछि डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड रे +1 एतिकी छाडिले व्यतिक्रम जो थरे ऑक्सीजन रो ऑक्सीडेशन नंबर टा -2 नुए अन्य सबुत कंपाउंड रे ऑक्सीजन रो ऑक्सीडेशन नंबर -2 देखो आ गोटे हला हाइड्रोजन रो सब बेले +1 यार एक्सेप्शन अच्छी कौन ना धातव हाइड्राइड मेटालिक हाइड्राइड रे मेटल टा मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हाइड्रोजन टा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से -1 तारा सोडियम हाइड्राइड -1 कैल्शियम हाइड्राइड -1 सो मेटालिक हाइड्राइड रे केवल -1 किंतु अन्य कंपाउंड मान करे हाइड्रोजन हमेशा +1 हला देन आसला मोनो एटॉमिक सर बिस्मार्क आगे सर सर आपण कहते तो CH2 अलगा जतले दीटा हाइड्रोजन प्रति बाहर कहथिले प्रति हाइड्रोजन रे बाहर माने H2 माने दीटा हाइड्रोजन -1 को कैल्शियम 2 +2 आ हाइड्रोजन दीटा আছে না हला तले सर हाइड्रोजन -1/2 हो नहीं सब बेले ऑक्सीडेशन नंबर तो लिखिबो गोटे सिंबल ऊपर ऑलवेज असाइन फॉर वन सिंगल एटम से लोक बुझिबो ठीक दीटा अछि टोटल होची -1 दीटा हेले -2 कैल्शियम गोटा करो +2 सो चार्ज बैलेंस हे गला किंतु लिखिला बेले दीटा हाइड्रोजन अछि बोली आमे -2 लिखिबानी जे बुझिबो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन टा -2 न आमे लिखिबा -1 जतेटा हाइड्रोजन था तर मु कहबी बिस्मथ सल्फाइड ए सल्फर होची माइनस सल्फाइड नॉर्मल सल्फाइड -2 तमे कोन -6 लिखियो नो कैलकुलेशन कला बेल को -6 करियो किंतु ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर लिखिबा को सिंगल एटम पिछा -2 बुझला बिस्मथ रो +3 आगे सर आगे सर एमती मझरे मझरे तमे हाथ टेकी करी पचरिबो प्रश्न इवन दोज हु आर वाचिंग इन द YouTube they can also use their chat box to ask questions मु देखुची सब बेले चैट बॉक्स देखुची नाउ मोनो एटॉमिक आउटे नियम हला मोनो एटॉमिक एक परमाणु विशिष्ट मूलक बा मोनो एटॉमिक रेडिकल्स आयन्स बा रेडिकल्स जाको हमें पुराना काल रे कहउथले nowadays nobody is saying radicals ions तर क्लोराइड आयन -1 ब्रोमाइड -1 तार बैलेंस जेते की तार ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू इट्स बैलेंस मोनोएटॉमिक ऑक्साइड -2 मोनोएटॉमिक सल्फाइड -2 नाइट्राइड -3 सोडियम तार वेरिएबल बैलेंस देखानी +1 कैल्शियम +2 एल्युमिनियम +3 किंतु जो गुडा का ट्रांजिशन मेटल जो माने चल जोजता देखांती आयरन +2 भी अछि हेई परिबो +3 भी हेई परिबो कॉपर +1 भी हेई परिबो क्यूप्रस क्यूप्रिक भी हेई परिबो सेमती स्टैनस +2 भी हेई परिबो स्टैनिक +4 भी हेई परिबो सेमती मर्कुरस +1 भी हेई परिबो जाको हमें लिखु Hg2 2+ मर्कुरस टा छोटो पिला बेले तुम लिखुतले Hg1+ बा +1 किंतु एक्चुअली ए 11th क्लास रे तुम जानिबो जे मर्कुरस टा दीदीटा एकाठी थांत Hg+ संगे आउटे Hg+ रे गोटे कोवेलेंट बॉन्डिंग थाए
बिकॉज अनपेड इलेक्ट्रॉन टा पेयरिंग हो जाए से माने परे पढ़िबा हमें पैरामैग्नेटिक रु डायमैग्नेटिक हो जाती सेटा स्टडी हो जाई सेति पई मर्क्यूरस रो सिंबल Ag1+ में Ag2 2+ किंतु ऑक्सीडेशन स्टेट होची +1 यार फार्मूला एटा किंतु जे कहबो मर्क्यूरस क्लोराइड रे मर्क्यूरस क्लोराइड रो फार्मूला होची एया Ag2 2+ क्लोराइड 1-। सो एटा आसला ठीक एटा आसला ठीक 1 तो लिखा जाएनी तो Ag2 तो रहिला Cl2 सो मर्क्यूरस क्लोराइड रो फार्मूला हला Ag2Cl2 किंतु आगे हमें छोटो पिला वाले लिखुले कोन AgCl यार 1+ यार 1- तने AgCl किंतु ना मर्क्यूरस एक्चुअल सिंबल हला Ag2 2+ तेणु Ag2 2+ एड क्लोराइड रो वैलेंस हला 1- 1 तो लिखा जाएनी एटा ऑलरेडी 2 अछि आ एटी 1 कोन लिखिबा लिखा जाएनी 2 टा एटिक आसला सो ब्रैकेट उठी हला Ag2Cl2 किंतु जदि के पचारिबो मर्क्यूरी रो ऑक्सीडेशन नंबर केते तो एटी +1 लिखिबो +1 लिखले ही जानिबे लोक एटा मर्क्यूरस माने मर्क्यूरी बोली भाबे वेल कृष्णा तुम्हें वीडियो बंद कर दे पारो बंद कर दबाटा बेटर कारण आमे एठिके आसीचे आसीबा बा कंटिन्यू करिबा ओनली व्हेन वी हैव ए पैशन कारण एमाने सब जानती जे गोटे मन भितर खुशी एवं हार्ड वर्क करने पाई मन इच्छा गेदे पेली कि बापा माँ कहते बोली पढ़ा हम से तुम डॉक्टर बनीगल से किसी लाभ नहीं तुम लाइफ लॉन्ग तुम दुखरे कट सेमती इंजीनियर बनीगल कि लाभ नहीं IIT पाइगल कि लाभ नहीं लाइफ लॉन्ग दुखरे कट जोटा तुम निजे खुशी कर निज उद्यम निज प्रचेष्टा कर नॉट गेदा पेला तो मोनो एटॉमिक आयन मानकर तार वैलेंसी जहाँ तार ऑक्सीडेशन स्टेट से आउ कथा हला गोटे न्यूट्रल मॉलिक्यूल रे आ गोटे सम ऑफ ON इज इक्वल टू 0 ON टा गोटे काल्पनिक ON टा गोटे काल्पनिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल एंड कोवेलेंट आयन पाई किंतु आयोनिक कंपाउंड पाई हेटा काल्पनिक में एक्चुअल चार्ज पानी भितरे सॉल्युबल हे गले से एक्चुअली पळेबो छाडी करी Na+ गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस हेथियो तार गोटे गात मु जेमति कहे गोटे गात थिबो आउ क्लोराइड आयन गोटे थंट थिबो जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन थिबो से अलगा है कि बुलिबे ये अलगा जंतु से अलगा जंतु कोड सेमति नंगळा है कि बुलिबेनी they will be hydrated they will be surrounded by water molecules so that is called hydration we'll be talking about that later से मध्य तांकर भी लाज अछि से मध्य नंगळा है कि बुलिबेनी से तांकर पिंदिबे पानी रो कोट पिंदी करी बुलिबे पानी भीतर अच्छा फॉर एग्जांपल तर आमे कहिबा पोटेशियम परमैंगनेट एटा गोटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल तर मैंगनीज रो ऑक्सीडेशन नंबर केते कारण हम जणा पड़छि पोटेशियम रो वेरिएबल बैलेंस नाही गोटी बैलेंस +1 से चेंज होवार नहीं ऑक्सीजन टा -2 चेंज होवार नहीं एटा पेरोक्साइड नुए तमे कहबा आप आमे केमि जानले एटा पेरोक्साइड नुए बोली तमे जानि धीरे धीरे मो संगे रहिले जानि परिबो एटा पेरोक्साइड नुए नॉर्मल ऑक्सीजन तेणु केवल मैंगनीज टा कैलकुलेट करियो पड़ियो एक्स मेथड रे धर पोटेशियम तो सब बेले +1 मैंगनीज टा एक्स धर एक्स एटा एंड ऑक्सीजन गोटा को जदि -2 हला चारटा को -8 4 into -2 is equal to 0 because it is a neutral molecule so whether it is an ionic compound the real charge the samasti 0 or it's a covalent molecule or a mixture here it is both covalent you know the ithre di prakar bond achi between potassium and permanganate is ionic bonding or electrovalent bond and in between manganese and oxygen it is covalent bond so di prakar ro achi bond covalent as well as ionic anyway आमे मैंगनीज रो ऑक्सीडेशन नंबर बाहर कले केते ना x = बाहरला +7 सो मैंगनीज ऊपर आमे गोटे
+7 लिखिक गोल बुले दबा because it's not the real charge. It is the hypothetical charge, what we call oxidation number or oxidation state. सेमिति गोटे आयन रे गोटे पॉलीएटॉमिक आयन मोनोएटॉमिक आयन तो ऑलरेडी सरीची पॉलीएटॉमिक आयन रे sum of ON is equal to the charge, net charge of the ion. For example, मु कहिबे नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट गोटे आयन तार चार्ज होची 1 माइनस हमें लिखि दो हमें एते कॉन्फिडेंट हमें एट सेमति लिखि दो ब्रैकेट लिखुनी किंतु एक्चुअली होल नाइट्रेट रो चार्ज होची -1 परवर्ती काल रे तुम जानिबो से चार्ज ता -1 ता केमति खेले हेगिरी केतेटा एटम संगे खेले हेगिरी अछि हमें परवर्ती काल रे जानिबा. सो नाइट्रोजन रो ऑक्सीडेशन नंबर जदि बाहर करियो चाहिबी धर x नबा ऑक्सीजन गोटा को -2 हेले तीनटा को -6 इज इक्वल टू एटी 0 नुए इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑफ द आयन नाइट्रेट रो चार्ज होची -1 सो -1 सो x बाहरला +5 सो एटी गोटे पेंसिल रे कारण एटी दीटा चार्ज हे गोटे असली नकली ए नाइट्रेट ता होल नाइट्रेट रो चार्ज है किंतु एटी नाइट्रोजन एटम रो ऑक्सीडेशन नंबर होची +5 नॉट 5 +5. So actual charge oxidation number could distinguish करिया पई हमर कन्वेंशन होची आगो साइन प्लस की माइनस देन नंबर 2 3 4 5. अवश्य आयनिक कंपाउंड मानकर मध्य जेतबे ऑक्सीडेशन नंबर कथा आसीबो गोटे रिएक्शन रे ऑक्सीडेशन स्टेट केमि चेंज होची ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होची सेतबेले मध्य आगो साइन लिखिबो जदिओ प्रकृत चार्ज सेटा कैल्शियम 2+ लिखा कथा जेहेतु आम ऑक्सीडेशन नंबर रो जन्मटा गोटे कल्पना रही गोटे हाइपोथेटिकल केस रही डेफिनेशन टा तार हाइपोथेटिकल तेणु आम आग साइन लिखा तापर नंबर लिखा. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन बट देयर आर सो मेनी बट बिकॉज इन दिस मीन टाइम लेट मी आस्क यू टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एलिमेंट पर क्लोरेट आयन क्लोरीन रो बाहर करो पोटासियम डाइक्रोमेट क्रोमियम रो बाहर करो सोडियम पेरोक्साइड ऑक्सीजन रो बाहर करो दिस इज पेरोक्साइड एंड यू हैव से क्लोरीन डाइक्लोरीन ट्राइऑक्साइड बाहर करो क्लोरीन रो देखो केते क्लोरीन रो भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर पाइबो तो केवल धातु चलजोज्यता देखाए ता नुहे अधातु मध्य चलजोज्यता देखाए जो जोज्यता को आमे एबे कहलेनी ऑक्सीडेशन नंबर बा जारण संख्या फॉरगेट अबाउट यू मु मजरे मजरे ओडिया कहूची कोन पई बिकॉज़ मेनी गाइज आर फ्रॉम ओडिया मीडियम बैकग्राउंड एंड फॉर द ट्रांजिशन you need to listen to both Odia and English so that there will be a smooth transition from loving Odia only and being alienated from English. पूरा दूरी जीवा इंग्लिश कहला माने हम के केमती खाप छोड़ा लगे सेमती हबनी. केते बाहरला Bisma is ready. X मेथड रे बाहर करबा श्रवणी तर क्लोरीन टा X ऑक्सीजन गोटा को -2 हेले चारटा को 4 * -2 जेहेतु एटा गोटे आयन होल पर क्लोरेट आयन रो चार्ज होच -1 सो इज इक्वल टू 0 होबनी एटी -1 सो X बाहर ला केते ना +7 तो पेंसिल रे क्लोरीन ऊपर हमें +7 करी गोल बुले दबा एटा नकली चार्ज क्लोरीन रो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर बट पर क्लोरेट गोटे मोटा आयन होल आयन रो चार्ज होची 1 - अच्छा पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल पोटेशियम रो गोटा होची +1 सब बेले अल्काली मेटल्स मानकर चलजोज्यता नाही सो 2 * +1 + 2x कारण सब बेले ऑक्सीडेशन नंबर गोटे एटम पिछा सो 2x + 7 * -2 तमाने -14 इज इक्वल टू 0 हेले x बाहर ला केते ना +6 सो पेंसिल रे बा कोथरे कलम रे क्रोमियम रो ठीक ऊपर मुंडो ऊपर +6 लिखि दियो बोल बोली सो क्रोमियम रो ऑक्सीडेशन नंबर होची +6 एठी एटा जेहेतु पेरोक्साइड
न होइतिले 2 ही न था सोडियम ऑक्साइड जदि था Na2O होई था 2 माइनस टा एठी आस्ता था एठी 1 एठी था किंतु पेरोक्साइड बेली Na1 प्लस एंड O2 2 माइनस तो 2 टा एठी आसला 1 तो लिखा जायनी सो Na2O2 माने पेरोक्साइड सो तुमे जदि ताकू एक्स मेथड रे करियो भी भलो आउ टिके जदि तमे प्रॉम्प्ट हे जीवो ताले संगे संग कर दे पारि O2 2 माइनस नै जीवो एठी ताकू आयन भी कर दे पारिबो सोडियम पेरोक्साइड रे ऑक्सीजन जेति की ऑक्सीडेशन नंबर पेरोक्साइड आयन रे भी सेति सो सोडियम गोटा को हला +1 दीटा को 2 * +1 +2x +2x ऑक्सीजन केते बाहर करियो को अछि 2x = 0 तो x बाहरला -1 सो आगुरु आमे जानि छे व्यतिक्रम जो लिखितिलु जे पेरोक्साइड रे -1 सुपर ऑक्साइड रे -1 ऑटोमेटिकली बाहरिबो तो माने देखो नाइट्रिक एसिड रे नाइट्रोजन रो ऑक्सीडेशन नंबर जेति की सेइथिरु बाहरुथिबा नाइट्रेट आयन रे मध्य तार नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर सेति एठी 0 करिकरी हाइड्रोजन टा +1 नै करी जेति की बाहरिबो एठी हाइड्रोजन न नै करी -1 करिकि सेति की बाहरिबो जीवो कुआडे नाइट्रेट आयन टा नाइट्रिक एसिड रो आस अन्य किसी चेंज हेनी तेणु समान रही सेमती पोटासियम डाइक्रोमेट रे क्रोमियम जति की बाहरला +6 सेथिरु सृष्ट डाइक्रोमेट आयन रे मध्य 2 माइनस करिकि मध्य सेठी मध्य +6 बाहरी सो केते गुडा किंतु पैराडॉक्सिकल केसेस अछि तुमको एक्स मेथड रे गोटे प्रकार बाहरिबो सो सेही गुडा केते गुडा को तुमको डिस्कस कर दोची बिकॉज़ धरो आमे करिबा S2O3 2 माइनस एटा की आयन ये कहि परिबो की आयन खोली करी को यू आर नाउ ओपन सो फार श्रावणी रही चंती प्रीतम रही चंती प्रवासी कृष्णा एमन सब हमु अलाउ कली तमे किछि मनमुना करिवोनी तुमे जदी टिके घंटा लेखा डेली देई परिबो होमवर्क करके प्रैक्टिस करिया को नॉट मच टिके टिके किछि किछि देन 10 दिन जाको थाके जिवो एंड यू विल बी गेनिंग enormously not only chemistry but also you will be familiar with the listening skills English listening skills yes Visma sir thiosulfate it is called thiosulfate ion यार ना होची thiosulfate pH लिखि पारो किबा अमेरिकन इंग्लिश होची F किबा pH लिखि पारो ब्रिटिश इंग्लिश तो thiosulfate ion रे x मेथड रे केते बारची ना सल्फर जदी x हुए दीटा को 2x ऑक्सीजन गोटा को -2 हेले तीनटा को -6 इज इक्वल टू जो एटा गोटे आयन टा इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द आयन -2 सो x बारला +2 सो एठी तमे लिखिबो +2 किंतु एटा गोटे पैराडॉक्स कारण प्रकृति रे सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर प्रकृति रे +2 नाही मु जे स्ट्रक्चर करि देबी एवं तार जो डेफिनेशन कहिची जैसे माने ये हेबे कोन ना बॉन्ड गुडा को सब इमेजिनेशन इमेजिनरी लेवल रे भांगी जीवो जोरजार मूलक तार कांसेप्ट रे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पाको सब इलेक्ट्रॉन पळे आसीबो जति की इलेक्ट्रॉन लॉस करछि गोटे एटम तार सेति की प्लस हो जति की इलेक्ट्रॉन गेन करछि सेति की माइनस हो ऑक्सीडेशन नंबर तो से मेथड रे हम देखिले मु जदी स्ट्रक्चर टा करि देबी देखो तुमे कुहो ए सल्फर रो केते से सल्फर रो केते एटा होची थायोसल्फेट आयन रो स्ट्रक्चर जोटा सल्फेट आयन संगे हु बहु समान तो ऊपर ऑक्सीजन जगह रे सल्फर खाली अछि गोटे ऊपर ऑक्सीजन थिला सल्फेट से जगह रे सल्फर दे देले सेटा हिजो थायोसल्फेट सो यू हैव टू फाइंड आउट टू टाइप्स दी प्रकारिया सल्फर एठी अछि आमे जो एक्स मेथड रे बाहरला सेटा एवरेज हाराहारी कारण दीटा सल्फर एठी अछि आमे स्ट्रक्चर न जानले केमिकल बॉन्ड जेतले पढिबो लखे thousands of molecules covalent molecules and ions रे स्ट्रक्चर जानि तुम निजे निजे ट्रिक जानिबो जे कोनोसी मॉलिक्यूल बा आयन रो कोवेलेंट मॉलिक्यूल बा आयन रो तुमे लुईस स्ट्रक्चर कर दो बॉन्ड स्ट्रक्चर कर दो सेथरे देखि देले जणा पड़ जिवो कार केते सो किए कहि परिबो ए मझी सल्फर को कोदी सेंट्रल सल्फर रो केते एवं बाहर सल्फर रो केते स्वयं कहीं बसो Nihar and Visma, they have raised their hands. Shakti Swarup, achandi na nahi?
आउ विष्णुप्रिया अच्छा ना गले कोई बात नहीं। तुम्हें कौट सुंदरगढ़ रे ना कौट बर्तमान छुट्टी रे अच्छा ना नहीं स्कूल रे अच्छा विष्णुप्रिया आर यू स्टिल देयर? यस कहीं स्वयंजीत कहला स्वयंजीत स्वयंजीत को सर 6 कौन 6 हो आउ किए हाथ टेकिथिल निहारंजन पानी कोड पड़ेला हाथ कहीं मार करदेल विस्मय को सर ऊपर सल्फर जोटा अछि सेटा 0 मझी सल्फर रो +4। यस देखो तुम्हें जति आउट ऑफ टच स्वयं हेइछ विस्मय भी सेतिक आउट ऑफ टच मु जाई कि पुरी रे ता घरे पढेनी आउ सेतिक जहां लास्ट कैंप रे कि हमर रिवीजन हेइतला किंतु तार रिकैप्चुलेट से करि पारला तुम करि पारलनि कि मन मन उणा करन जहार मकसद सही रहिबो सबू सारे कायन गोटे हिंदी फिल्म रो डायलॉग मोर मन पड़छ सारे कायनात आपको हेल्प करने लगेंगे अगर आपका जुनून रहेगा बरकरार कुछ कर दिखाने का जो जलवा जुनून रहेगा तो सारे कायनात मींस नेचर सारे कायनात आपको हेल्प करने में जुट जाएगा। ये यूरेनियम कौन सी बड़ी बात है सारे कायनात सो देखो आमे जो डेफिनेशन करथिले ऑक्सीडेशन नंबर सब बॉन्ड भांगिबो अच्छा ये दीटा को एका तू तो जे मु तो सी सल्फर सल्फर तार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान तेणु जो बॉन्ड भांगिबो तू कोन मो इलेक्ट्रॉन नहीं जीवु तो जीवर एडे हाड़ अछि ना मझिरु दिफाळ होई जीवो जेझा इलेक्ट्रॉन ये ता इलेक्ट्रॉन नबो से ता इलेक्ट्रॉन नबो जदि किछि इलेक्ट्रॉन लॉस हेलानी कि गेन हेलानी ताले ये जो बाहर सल्फर अछि पेरिफेरल सल्फर विल हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट बट ये जो मझिरे सल्फर अछि ए सल्फर जो किछि गेन हेलानी कि लॉस हेलानी किंतु ऑक्सीजन ता मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तेणु एपटे गोटे हरैला एटा डबल बॉन्ड एठी दीटा हरैला निजर एठी सिंगल बॉन्ड एठी गोटे हरैला सो एठी गोटे एठी गोटे एठी गोटे एठी गोटे चारिटा तीनटा दिगरे हरैला +4 हबो ऑक्सीडेशन स्टेट आ तू तो जे मु तो से दिगरे किछि हरैलानी कि गेन कलानी तो ता दिग आडू किछि नाही केवल ऑक्सीजन दिग आडू चारिटा इलेक्ट्रॉन हरैला तेणु +4 बाहरे बाहरटा 0 कारण सी कहा संगे लागिछि ना सल्फर संगे लागिछि सेटा भांगी गले किछि हो ना गेन करिवो ना लूज करिवो तो दी प्रकारिया सल्फर अछि +4 अछि 0 अछि किंतु तार एवरेज ने आलको +4 युक्त 0/2 दीटा सल्फर तेणु +2 आसुची आमे जो एक्स मेथड रे बाहर कले सेटा हाराहारी सेटा इक्वेशन लिखिला बेले +2 आमे लिखि दे किंतु जेतबेले परीक्षा रे पढिबो एमसीक्यू पढिबो जे सल्फेट आयन रे गोटे परीक्षा रे पढितला सॉरी थायोसल्फेट आयन रे ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर ए ओनली +4 ओनली बी +2 only, C 0 only, D +4 and 0 only, and only कहीं +4 and 0 दीटा सल्फर अच्छी तो कोटा ठीक हम ना +4 only ना +2 only ना 0 only so +4 मार्क वाला भी अच्छी गोटे और 0 वाला भी गोटे अच्छी so the correct answer will be D not A B C सेठी भाई एरा किए बुझिले हाथ टेक ओ चिन्मयी कौन लिखिलनी नो सर मु तो विष्णुप्रिया कथा पचारुची चिन्मयी था 20 सी कौन लिखिलनी नो सर और नो सर माने कौन चिन्मयी चिन्मयी आरटी ऋतुपल्ली जे ऋत रत रतपल्ली जे चिन्मयी तो अलगा पिला विष्णुप्रिया तो अलगा पिला नो सर कौन लिखिलनी मत बुझेइल अच्छा बुझिला तो को माने बुझिला हाथ टेकिला
आउथरे हाथ प्रवासी सर सर आमे जतले करिवु गोटे पडिथिबो ऑक्सीडेशन नंबर जार बाहर करिवु आमे केम जानिबु सेटा पैराडॉक्सिकल कि नॉर्मल सेटा तुमे जानि परिबो जते जते अक्वेंटेंस बढ़िबो मु बर्तन 15टा 20टा एग्जांपल देबी सेतक जानि सल्ला परे तुमे निजर गोटे इनसाइट डेवलप करि जिवो जे प्रकृति कोन एंड यू हैव टू वेट टिल केमिकल बॉन्ड चैप्टर यू आर मास्टर केमिकल बॉन्ड चैप्टर मास्टर ले तुमे जानि परिबो जे प्रकृति फर्स्ट ऑफ ऑल गोटे मौलिकर मल्टीपल थिबो एक को अधिक थिबो फॉर एग्जांपल देखो आ गोटे छोटो एग्जांपल मु दोची अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन दी प्रकार अछि एटा गोटे साधारण पिला बुझी परिबो ए नाइट्रोजन टा अछि पॉजिटिव आयन रे कैटायन रे ए नाइट्रोजन टा अछि आनायन रे कांता को आयोनाइज कर दबो NH4+ आउ NH4+ NO3- सो सेपरेटली से बाहर करिवो तुम जदि 2x मेथड रे बाहर करिवो हबनी नाइट्रोजन तो दीटा नाइट्रोजन ताको 2x करो +4 चारटा हाइड्रोजन को गोटे +1 हेले चारटा को +4 -6 इज इक्वल टू 0 एटा केते हेलानी -2 सेपटे गले 2 +1 तो एटा हला एवरेज किंतु को दीटा जक नाइट्रोजन भितर कोटा +1 नाही ए नाइट्रोजन टाको सेपरेटली बाहर करिवो आयन रे आयन करिया को पड़िबो नाइट्रोजन x प्रति हाइड्रोजन टा +1 हेले चारटा को +4 इज इक्वल टू +1 का एटा आयन x बाहरला -3 तेणु एठी -3 रे अछि मुटके पेन रो कलर चेंज करूची आ एठी पुनी आउथरे बाहर करो x -6 ऑक्सीजन गोटा को -2 हेले तीनटा को -6 इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू +5 सो एटा हला +5 सो आमे जो 2x मेथड रे कले +5 -3/2 सो 2/2 +1 बाहरला किंतु +1 वाला केई ना तेणु प्रथमे विस्मय प्रथमे जानिबो जदि गोटे मौलिक मोर देन 1 अछि तबे जानी पारो जे डाल में जरूर कुछ काला हो सकता है H2O3 दीटा सल्फर अछि सिमिलरली नाउ सी अनदर केस तबे जानिबो मु जति केस वर्तमान डिस्कस करी तबे जानि परिबो तो सस्पेक्ट करिवो जे एथरे पैराडॉक्सिकल केस ही पारे S4O6 आकु कोनते टेट्राथायोनेट आयन ए चिन्मयी आरटीए कोडिए सार आमे समस्ते गुरुकुल आसी सारिछु बा घर को आसी सारिछु ओके चिन्मयी भी घरे अछि किंतु बोधे लागुची नो सार जो लिखिल सेटा बोधे तुम सांग विष्णुप्रिया पाई विष्णुप्रिया नाथ आम गहन रे आउ नाहंती माने मु माने आम गहन रे माने ए जो क्लास रे नाहंती राइट नाथे अच्छा ना से टिके रेस्ट अच्छी से पर देखियो से बहुत सीरियस पिला से पर देखियो अच्छा ए जो S4O6 टा कहते टेट्राथायोनेट आयन टेट्राथायोनेट आयन सो एथरे x मेथड रे कोन बाहर करो केते बाहर छी कहलो देखिबा श्रावणी x मेथड रे बाहर करो वेल तुमको जदि कंफर्टेबल न लागिबो जूम रे जॉइन करियो काली ठर तुम ये करि परिबो कोन यूट्यूब रे तो जॉइन करि परिबो सो दैट किछ प्रश्न पचारियो पड़िबोनी कि बा मु श्रावणी 15 थर कहबिनी किछ कहय दरकार नै तुम से देखियो कंफर्टेबली आउथरे रिवाइज करियो चाहे आउथरे रिवाइंड करके पुणी आउथरे कि पॉज कर दबो दरकार पड़ले पॉज कर दबो पळेबो पुणी आसी खोलिबो जोटा एटा एठी संभव न एठी पूरा अलर्ट रहियो पड़िबो जेमति विस्मय पचारची क्वेश्चन सेमति पचारियो पड़िबो मो प्रश्न उत्तर देबो पड़िबो निरंजन पानी कहलो देखिबा एक्स रे केते बारला सर ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर टा एक्स मेथड रे केते बारला 2.5 यस 4x 6टा सल्फर को दे समस्त एका भली भाबिबा धुआमूला धुआमूला गोटे प्रकार भाबिबा ताले 4x -6 दुणे 12 इज इक्वल टू -2 कारण एटा गोटे आयन टा इज इक्वल टू -2 सो x बाहरला 10/4 और 2.5 प्लस 2.5 किंतु फ्रैक्शन केबे हे परिबो गोटे ऑक्सीडेशन नंबर प्रकृति रे कोन फ्रैक्शन हे परिबो नो कारण चारटा हलानी
मुझे तो कही गोटे रू अधिक हाला माने दाल में जरूर काला होगा, दोनों एक ही टाइप का हो नहीं सकते हैं, हो कभी भी नहीं हो नहीं सकते हैं, हो भी सकते हैं। आई विल शो यू केसेस वेयर मल्टीपल थाइकरी मध्य समान भी ही परिबे। अच्छा वर्तमान देखो मु जदि स्ट्रक्चर टा करिवि तुम को आमे केम जानिबु, अरे यू हैव टू वेट टिल chemical bond will be discussed with you wherever you are, whether you are with me or anywhere, you will be knowing. धर एटा हला टेट्राथायोनेट आयन S4O6 मझिरे दीटा SS लिंकेज अछि। एबे स्ट्रक्चर टा को ड्रा करो, ड्रा करी करी श्रावणी तुमे मते को प्रति सल्फर रो ऑक्सीडेशन नंबर केते। गाइस, those who are watching new and not subscribed to our channel SST Chemistry, please consider of subscribing to the channel so that whenever we will be doing videos for your interest, we are doing videos for only school level 9, 10, 11, 12 in important topics and exciting topics, so you will get the information, you will not miss out. के कहबो हाथ टेक। And since our programs will be mostly restricted to Odisha, because I have tried several times, talking in Hindi and English, only Hindi, only English, that solved less purpose than speaking Odia and English together. That means my viewers are mostly from Odisha. So let me be contented with that. Let me not be greedy to have more number of viewers. I don't want. Of course I want, but not disgruntled who cannot understand. If I am talking in Odia, sometimes they will feel bored. मजरे मजरे कौन से ओडिया कोई दूसरी सर किसी धरा को। And नॉर्थ इंडिया में आपको इंग्लिश जचेगा नहीं, they will feel alienated if you speak in English. आपको हिंदी में बोलना ही पड़ेगा, तो ये मुमकिन नहीं है हमेशा हम हिंदी में बोलेंगे, तो ये मुमकिन नहीं होता है। इंग्लिश को हम ऑटोमेटिक जंप कर जाएंगे, तो ये नहीं होता है। जितने बड़े कोच टीचर्स होते हैं वहां यूपी में, सॉरी नॉर्दर्न बेल्ट में, they have to speak in Hindi. And South India में तो English, they are very good at English. And of course their regional language and English, they are good at English. Okay. वर्तमान स्वयं कहला सर साइड दीटा सल्फर रो +5 और सर जो मझीटा सल्फर रो 0। से कहउचंती स्वयंजीत महांती कहउचंती जोटा टर्मिनल दीटा एपटे टर्मिनल सेपटे टर्मिनल +5 मझी दीटा को 0। ठीक अछि निहार? यस सर, ठीक अछि सर। इसमें नहीं सर तुम्हें कौन कहउचो? सर साइड दीटा जो अछि -5 मझी दीटा 0। नो, यू आर इनकरेक्ट, दे आर करेक्ट। तमे भूली गलो गोटे जिनस जे आमे केवल सल्फर खोजुचे, आमे आउ कहा खोजुनी सल्फर। ऑक्सीजन तो सब -2, केवल पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड छाड़ देले। देखो तुम्हें कहीं की भूल हो गला एठी, देखो ये तू तो जी मु तो सी, तू तो जी मु तो सी, तू तो जी मु तो सी, तो एठू दिफाळ हो गला, दिफाळ मझिरु दिफाळ, एठी मझिरु दिफाळ, एठी मझिरु दिफाळ। सो ए दीटा सल्फर जो मझिरे अछंती ए माने ना गेन कले ना लूज कले, तेणु ए दीटा कर 0। एई सल्फरटा एठी तार निजर डबल बॉन्ड रे दीटा लूज कला एपट साइड रे, ये डबल बॉन्ड रे एठी मध्य दीटा लूज कला, एवं ए सिंगल बॉन्ड रे एठी गोटे लूज कला। सो टोटल 5टा इलेक्ट्रॉन लूज कला, एपट साइड रे किछि लूज कलानी कि गेन करनाली,
कलानी किंतु एपट साइड रे डबल बॉन्ड दीटा सिंगल बॉन्ड गोटे रे 5टा इलेक्ट्रॉन से लूज कला तेणु एटी +5 तेणु से माने ठीक कहिथिले एबे बुझिलो आज्ञा सर क्या अवस्था भी सैया ये भी मध्य निजर 5टा इलेक्ट्रॉन को से लूज करूची तो एठी भी +5 तेणु मिसई देले +5 +0 +0 +5 by 4 मिसई देले 10/4 2.5 आसिलानी सो आज प्रत्येक +2.5 बट एक्चुअली एवरेज जस्ट मैथमेटिकल मोर कॉन्सेप्ट अंक कला बेलू आम नहीं पारिबा किंतु प्रकृति ता भितर जदि एमसीक्यू पड़िबो ताहले +2.5 कहार नाही 0 दीटार आउ दीटार +5 हैला बुझिलो जो माने बाहरे देखुचंती बहुत संख्यारे पिला देखुचंती बाहरे रहिकिरी से माने लिखि दियंतु टिके चैट बॉक्स रे लिखिकिरी मते टिके एनकरेज करंतु so that I will be motivated you know I told you in the beginning that mutual motivation देखो केते पिला जॉइन करथिले जूम रे वर्तमान रहिछंती अल्प पिला कारण मु मना करिनी जते बेले विस्मय मते रिक्वेस्ट कले जे हम स्कूल रो अन्य पिला किसी मिसिबा को चाहउचंती यस माने मिसी पारिबे किछि असुविधा नै किंतु मिसी पारिबे जे से माने कंटिन्यू करि पारिबे सेटा तांको ऊपर रहउची पूरा सेति की इंटरेस्ट थिबा दरकार एवं सेति की लगन थिबा दरकार से आउट एग्जांपल तुमको दउची देखो मु कहिबी S2O8 या ना होची पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड तार करेस्पोंडिंग आयन टा होची S2O8 पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड और आपको कहते मार्शल्स एसिड ये करेस्पोंडिंग आयन होची पेरोक्सी डाइसल्फेट आयन FAT लिख बार और सिंपली परसल्फेट आयन के ताको शॉर्टकट रे परसल्फेट आयन भी कहते पेरोक्सी डाइसल्फेट आयन सो सल्फर एठी जाय जति की बाहरिबो एठी सेति की बाहरिबो चलो 8 रे करबा एक्स मेथड रे केते करबा सल्फर रे केते टिके कलो देखिबा स्वयंजीत हाथ लिखिं विस्मय त्रिपाठी हाथ तो अन्य माने किछि मन उणा करनी कारण एमाने सब मल्टीपल टाइम्स हमर कैंप रे रही चंती सो आज चैट बॉक्स रे किछि आसी ना चैट बॉक्स रे किछि आसी नै से आगु पुराना तू न्यू मैसेज देखिया श्रावणी राव लिखते -4 कौन -4 तो किसी नहीं श्रावणी राव ओके कौन कहूँ कि श्रावणी किसी कहल कि नो सर ओके प्रीतम कहल सर x +9 +9 यस -9 केम थेला मो हाइड्रोजन गोटा को +1 हेले दीटा को +2 2x 8 दुणे 16 -16 = 0 हेले केते हला x केते बारला स्वयंजीत केते बारला x सर +7 +9 कोड बारला तबे कोन कलो ना 16 दुक तो 2 18 कर दलो किंतु एटा 14 -14 होई कि सेपटे अरे अंक रे तमे एते दुर्बल हेले हबो अंक रे जे स्ट्रांग हबो से जाई कि साइंस से स्ट्रांग हबो साइंस सब बळे मैथमेटिक्स को नउची सांगरे सब साइंस एवे तो मेडिकल साइंस पढिला बेले टिके मैथमेटिक्स यूज कमी जीवो हबनी ऑलमोस्ट हबनी कहले चले किंतु +2 रे दरकार हबो पूरा मेडिकल पाइबा पर्यंत यदि तुम अंक रे दुर्बल हबो फिजिक्स रे हबनी
केमिस्ट्री रो 1/3 रे हबनी केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री इज सेम एज फिजिक्स सिमिलर टू फिजिक्स नॉट सेम सिमिलर टू फिजिक्स अंक सब बळे आउ ता छडा जनरल जो केमिस्ट्री जोडा का में मोल कांसेप्ट स्टोकियोमेट्री सेथरे मध्ये अंक तो अंक सब बळे दरकार +7 किंतु एटा एटा एवरेज भी नो किछि नो मजा जिंस कोन आगुरु जो केस नेले सेटा एवरेज बारतिला एटा नामुमकिन केस एटा नामुमकिन केस ना एवरेज ना इंडिविजुअल नथिंग सल्फर होची ग्रुप 16 रो लोक ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम ए माने आगुरु ग्रुप 6A को जाउथला तार जोजोता कक्ष बा बैलेंस सेल रे 6टा इलेक्ट्रॉन अछि हमें देखिबा NH2 NP4 S रे 2टा P रे 4टा 6टा तो मैक्सिमम से 6टा इलेक्ट्रॉन को से माने शेयरिंग करि परिबे देई परिबे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम संगे से प्लस आसीबो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव संगे माइनस आसीबो जहा भी हो 6 अधिका जीवो +6 विल बी द हाईएस्ट ताटो अधिका केबे हेई परिबोनी गहम गोटी गणता 6टा इलेक्ट्रॉन अछि से 7टा किम दबो सो डाल में जरूर कुछ काला है तो सेति पई ट्रिक जो माने केमिकल बॉन्ड न जानि चंती ए भलिया बाहरिला माने ग्रुप जिंस जानि चंती जे ग्रुप 6 रो 6 माने 16 जा पुराना कालिया 6 सेया 6A 6टा इलेक्ट्रॉन ताकर अछि तो सेटू ताको कोन करबो ट्रिक होची जहा अधिका जदी बाहरला ताको टाणी आनी करी ग्रुप ग्रुप संगे समान कर दबो माने ग्रुप माने 6 पुराना नोमेनक्लेचर जोडा 6 तो एटा से हेई परिबोनी एटा नामुमकिन होई पारिबो नाही तेणु +6 करी छाड़ दियो +6 करी छाड़ दियो आंसर ठीक हो किंतु वर्तमान तुमको मु स्ट्रक्चर कहबी पेरोक्सी डाइसल्फेट रो स्ट्रक्चर कहले ते जानि परिबो कोन पई पेरोक्सी माने गोटे पेरोक्सी लिंकेज अछि सल्फर सल्फर भितरे गोटे पेरोक्सी लिंकेज अछि तमे कहबो सहार आपण सिंध फटाफट करचंती आमे केमती करिवो तुम करिवो देखो आगे आगे देखिए होता है क्या तुम्हें नीचे जोड़ी पड़ो केमिकल बॉन्ड पड़ी सरला पर तुम फटाफट स्ट्रक्चर कर दो पेरोक्सी डाइसल्फेट H2O7 सॉरी H2O8 3 3 6 मजरे 2 8 तुमको बाहर करिया पड़ियो ए सल्फर एवं ए ऑक्सीजन ए दीटा भिन्न धरणर ऑक्सीजन तारी जोगु एतक हैला ता जोगु एतिक हैला पायुजा तुम कौन कलो पायुजा अछंती पायुजा मैंने राम रतन गन पायो पायो जी ओसरा पायो जी पायुजा यो जी मैंने राम रतन गन पायो पायो जी मैंने राम रतन घन पायो प्रीतम कहलो सर साइड दीटा 5 आउ मझीटा 0 मझी दीटा ऑक्सीजन आयुष्मान कहलो साइड दीटा +5 मझी दीटा 0 ऑक्सीजन ए दीटा 0 आउ ए सल्फर दीटा +5 आज्ञा आई एम सॉरी विस्मय कहलो सर साइड दीटा +6 मझी दीटा -1 प्रिसाइजली तमे स्वयं से कहथन तो आज्ञा सर एटा हला +6 ये भी सेया एवं एठी -1 काहे की हला देखो तमे काहे की आयुष्मान भूल कहिलो आ ये भूल कहिला कोन पई देखो तमे भूली गलो जे एटा सिना तू तो जे मु तो से मझिरु दिफाळ हला किंतु एटा तो अलगा ना सल्फरटा जेहेतु तळे अछि ऑक्सीजन रे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से दबो तेणु एठी गोटे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पाइलानी तेणु -1 एठी मध्ये ए सल्फर आडू गोटे इलेक्ट्रॉन पाइलानी एक्स्ट्रा ये भी -1
या पाई निज निज पाई सिना ओ ओ बॉन्ड भांगिबा पाई सिना किछि नाही किंतु एपट आडू गोटे पाइलानी ये तेणु ये भी -1 ये भी -1 एंड मोर ओवर एटा पेरॉक्सी लिंकेजटा ओ अछि सेटा परवर्ती काल रे तमरे जानि परिबो एटा पेरॉक्सी माने -1 अच्छा ए सल्फर केतरा इलेक्ट्रॉन लूज करलानी एपटे गोटे एटी दीटा डबल बॉन्ड रे दीटा एटी डबल बॉन्ड रे दीटा एटी सिंगल बॉन्ड रे गोटे मु गोटे आ ऑक्सीजन रो देखौनी सो टोटल 6 दिगरे 4टा दिगरे 6टा इलेक्ट्रॉन लूज करानी सो ये भी +6 एका अवस्था यार भी एटा एटी डबल बॉन्ड दीटा एटी डबल बॉन्ड दीटा एटी गोटे सो एबे किए बुझिला हाथ देखो सो ये भी +6 ये भी +6 प्रवासी बुझिला प्रवासी 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 किए झियो ना पुओ प्रवासी से नहांती प्रवासी दुकान खोलिक पड़े कस्टमर आसिक जुटले माने सार आसी पचारे देखने को स्टूडेंट नहांती ओके आउ केतोडा सिंपल केस करी मु बंद करी धर आमे Fe3O4 कहबा याकू कहंती मैग्नेटिक ऑक्साइड फटाफट साइड और ताकू के कहंती फेरोसोफेरिक ऑक्साइड फेरस भी अच्छी फेरिक भी ऑक्साइड ता ना से एक्चुअली याकू बाहर कले +8/3 बाहर एक्स मेथड रे किंतु एटा मिसनोमर आमे एक्चुअली एटा हची फेरस ऑक्साइड आउ फेरिक ऑक्साइड मिसिक रे हेची एटा गोटे मोल फेरस ऑक्साइड गोटे मोल फेरिक ऑक्साइड मिसिक रे मैग्नेटिक ऑक्साइड नेचर तयारी करछि तेणु एठी गोटे मोल फेरस आयन अछि 2 मोल फेरिक आयन अछि तेणु फेरस ऑक्साइड रे मिसी गेले Fe3O4 होउनी एठी गोटे एठी दीटा Fe3 एठी गोटे ऑक्सीजन एठी तीनटा ऑक्सीजन Fe4 तेणु फेरस ऑक्साइड रे एठी +2 फेरिक ऑक्साइड रे +3 सेथुरु दीटा अछि सो +2 गोटे +3 दीटा ताकू जदि तीनटा आयरन जदि शेयर करंती ताले +8/3 बाहरला किंतु प्रकृत रे +8/3 कार नुए एवरेज किंतु गोटा कर आयरन रो +2 आउ दीटा आयरन रो +3 मु फटाफट कहबी तुमे सुनो सेमती गोटा अछि रेड लेड Pb3O4 ताकू कहंते रेड लेड पूरा देखियो को लाल एटा एक्चुअली किंतु बाहर से +8/3 बाहरियो किंतु एवरेज आर जे देखिबो एटा होची 2PbO.PbO2 गोटे लेड 4 ऑक्साइड अछि एटा +4 स्टेट रो अछि आ दीटा +2 स्टेट रो अछि सो लेड रो दीटा जो अछि प्लम्बस और प्लम्बिक गोटे होची +2 +4 लेड 2 रो दीटा अछि सो +2 युक्त +2 गोटे लेड 4 अछि +4/3 हेले एटा मध्य से +8/3 आसुछि किंतु प्रकृति रे +8/3 कहीं नहीं सर किंतु एवरेज वैल्यू ता सैटिस्फाई करूनी कोटा पायो जी मैंने राम रतन गन पायो कोटी +2 गोटे 3 3 6 2 8 +3 3 दीटा सो +3 युक्त +3 युक्त +2 +8 तीनटा आयरन भितर शेयरिंग जदि हबो एवरेज बार करिया को +8/3 सेमती रेड लेड रे मध्य +2 युक्त +2 युक्त +4/3 एटा मध्य 8/3 तुमे लेख सर हां मु तुमे लेख वर्तमान पायो जी सर एवरेज ठीक होउची बिली ले मोड लिखि दउ समस्त देखुचंती सर किंतु एवरेज वैल्यू तो सैटिस्फाई करूनी लेख सैटिस्फाई करूची बिली सल्फर कोठी सल्फर दैट नाही ओ एटा वेल इट हां दैट्स अ गुड क्वेश्चन पायो जी कोची पायो जा से कोची +4 युक्त +6 युक्त 0 युक्त 0 युक्त +6/4 एटा 12/4 एटा तो +3 हवा कथा सॉरी दीटा सल्फर सल्फर दीटा 6 6 12 युक्त 2 +6 किंतु हमर तो +7 बाहरला या तो कहूछ किंतु सेहित पे कहूची एटा रियली पैराडॉक्स +7 नुहे सेठी अन्य गुडा केस रे रियल एवरेज बारुछ ए केस रे +7 नाही काहे कि तुमको लागिला जदी मु तुमको कहि देई थांती फार्मूलाटा पेरोक्सी डाइसल्फेट रो फार्मूला मा एटा S2O6O2 2- ए O2 लिखला माने तुम जानछो एटा पेरोक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड सो 2x 6टा ऑक्सीजन को -12 ए O2 2- दीटा ऑक्सीजन को -2 टोटल टा हला -2
किंबा जदि S2 लिखता 0 होता +2 करता सो ये x बाहर +6 अनडाउटेडली किंतु ए केस रे मु सेमती कलिनी मु लिखिदेली लोक भाविले कौन एटा सबुतक 8टा जाक ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन किंतु प्रकृत में नॉर्मल ऑक्सीजन 6टा बाकी 2टा -1 वाला सीथि पई एवरेज एटा नुहे तुम जो एवरेज वाट सल्फर कहउछ आउ कहबनी एटा फेक अन्य केस रे सेटा एवरेज ए केस रे एवरेज नुह लेख मु बुझी पारली लेख मु बुझी पारली अरे पर पढ़ुची आयो जी मैंने और जदि किसी फॉलो अप क्वेश्चन थाए मत पचारि पार ए केस रे +7 जो बाहरला सेटा तार एवरेज नुहे एटा भूल हमको कहीं नेले ना आमे भूल रे सब तक ऑक्सीजन को गोटे प्रकार ऑक्सीजन भाबिले किंतु दी प्रकार ऑक्सीजन अछि आमे किंतु सल्फर बाहर करियो जाउचे ऑक्सीजन बाहर करियो जाउने बुझी मु बुझी पर यस यस ओके गला आउ गोटे एग्जांपल दउ तुमको N2O नाइट्रस ऑक्साइड आमे कोन +1 बाहर कर दवा आमे 2x - 2 = 0 कर देले एक्स्ट्रा हरिबो +1 ठीक अछि एटा एवरेज एटा किंतु एवरेज किंतु जदि मु स्ट्रक्चर करबी तमे जानि परिबो जे प्रकृत रे अरे छाड़ तमे जानि परिबो एटा गोटे डेटिव बॉन्ड छाड़ मु तुमको फॉर्मल चार्ज न दे के बर्तन कहिबी काइना फॉर्मल चार्ज शिखिबा परे मु डेटिव बॉन्ड टाको टिके छोट पिला को भलिया कहिबी तीर चिन्ह देबी ने 2टा इलेक्ट्रॉन ए नाइट्रोजन देछि मजी नाइट्रोजन सो कहलो देखिबा ए नाइट्रोजन रे केते ए नाइट्रोजन रे केते सो दैट एवरेज टा +1 आसीबो एठी एवरेज आसीबो सो तुमे 10 मिनिट एक्स्ट्रा दे देलनी तुम समय को मु चाहुनी तुम समय को नवा पई 2 घंटा रु अधिका ठीक नुहे किंतु जेहेतु तुमे सब बहुत भलो पिला तेणु तुमे वाच करूछ सिना किंतु मोरो किंतु काहे कि ना ए 2टा सब्जेक्ट हमर सरी गले तुमे गोटे प्रिपेयर करि परिबो आज किछि प्रैक्टिस करि परिबो अल्प किछि प्रैक्टिस कर देले आमे काली को आमे बाकी तक बैलेंसिंग करिबा बैलेंसिंग बैलेंसिंग परे परे केमिकल इक्वेशंस उडा टिके रिवाइज कर दवा केते प्रकार रो नॉन रिडॉक्स रिडॉक्स डिवीजन कला पर फटकिन मोल कांसेप्ट को काली पड़ेगा किंतु तरतर होबार नाही जहा सिखिबा भलो से सिखिबा 10 दिन आमे गोटे फाउंडेशन कोर्स पाइबा कार भरला प्रकृति रे नाइट्रोजन रे केते से नाइट्रोजन रे केते कौन खाऊची बस सब सो ये पिंपुड़ी चारियाड और कीबोर्ड रे पड़ी कौन बिस्किट खाद्य जोगी भाभी खाइला बेल पड़ी हाँ कहलो देखिबा निहार निहार कहलो पानी हो सर फर्स्ट नाइट्रोजन दा 0 सेकंड दा 1 ये अनोटेट करछलो कि मु तो x लिखिनी कि अनोटेट करछि मु तो अनोटेशन बंद करछि ना बंद करछि कोन देला लॉस x के लिखलो अच्छा एटा तू तो जे मु तो से एटा केते एटा अरे सर ए 0 कहना तू तो जे मु तो से ट्रिपल बॉन्ड हो कि डबल बॉन्ड हो कि सिंगल बॉन्ड हो से किसी लूज करबनी किंतु ए नाइट्रोजन ता 2टा जाक इलेक्ट्रॉन लूज करबो कारण ए 2टा डेटिव बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड्स 2टा जाक इलेक्ट्रॉन को लूज करबो तो एटा केते मजिदार 1 है केते के कोइ परिबो विस्मा सर 2 +2 काहे ने देखो निहार +2 हाँ बंद करो कारण देखो निहार ए जो तीर चिन्ह दिया जायछि ये गोटे अलगा टाइप रो कोवैलेंट बॉन्ड एइथिरे 2टा जाक इलेक्ट्रॉन गोटे नाइट्रोजन गोटे लोकर ए ऑक्सीजन किछि इलेक्ट्रॉन दे नै तेणु
ये दीटा जाक इलेक्ट्रॉन से किंतु नहीं जीवो काल्पनिक भाव में जो कली हम दीटा जाक इलेक्ट्रॉन नहीं जीवो सो ए नाइट्रोजन दीटा इलेक्ट्रॉन हरब +2 ए नाइट्रोजन तू तो नहीं मु तो जे मु तो से 0 सो +2 एवं 0 रो एवरेज बाहरला पायोजा +1 सेति आमर +1 बाहरला हैला सेमिति मु टिके तरतर हो जाउची कारण तुम सब भल पिला आ गोटे एसिड अछि H2SO5 एटा जेंति ए भी ते पेरोक्स लिंकेज अछि गोटे पेरोक्स लिंकेज अछि जदि आगुर जान न आकु कोंति पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड एटा डाइसल्फ्यूरिक एसिड एटा मोनोसल्फ्यूरिक किंतु पेरोक्सी अछि ग्रुप टा अछि और तब कोंति कैरोज एसिड एटार देखियो एक्स मेथड रे +8 भारियो +8 नामुमकिन +6 रु अधिक हो पारिबनी तेणु ताकू टाणी आनिक +6 कर दो जदि शिखिन किंतु जदि केमिकल बॉन्ड जानिथिबो ताल जानथबो जे गोटे पेरोक्सी लिंकेज अछि आ दीटा सल्फर नाही एसएस लिंकेज नाही तेणु डायरेक्टली गोटे पेरोक्सी बाकी जेमति नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड रे सेमति तेणु ए सल्फर ए 6टा दिगरे एठी गोटे हरेला एठी दीटा हरेला एठी गोटे हरेला एठी दीटा हरेला सो +6 एटा किंतु -1 ए दीटा को पेरोक्सी वाला ऑक्सीजन दीटा तेणु उभयकर -1 तेणु एटा +1 एटी +1 एटा किंतु -2 ये -2 ये -2 ए +6 ए +6 गोटे तो अच्छी +6 आउ दी थर कोन कह दे हला क्लियर है रेज योर हैंड्स को माने बुझ परलो अच्छा आउ केतोडा ए जे देखो वर्तमान क्लाइमैक्स सीन रे मु सब अद्भुत प्रकार रो मॉलिक्यूल कहिबी तेणु से समय जब खसी पड़े गोटे लोक तो जना पड़ो से तार आम जो टैलेंट सर्च जो आम करुचु से किसी काम हबनी गोटे गोटे पॉलीसल्फाइड कैटेगरी तुमको कहबी पॉलीसल्फाइड SX2 S2 2 हो पारिबो S3 2 S5 2 एमान भितर सल्फर सल्फर लिंकेज अछि नॉर्मल सल्फर एमान नहति धर मु कहबी Na2 S5 ता माने एठरे 2 Na+ अछि गोटे S5 2 अछि सब 2 सो एथरे S5 2 रे जदि मु करबी x मेथड रे भारिबो x = -2/5 गोटे फ्रैक्शन भारिबो किंतु कहार नुए मुझे स्ट्रक्चर कर देवी सल्फर सल्फर रो पूरा ट्रेन लास्ट रे -1 एटी -1 बाकी मझिरे ट्रेन तू तो जे मु तो सी तो एई जदि मु कर देवी इंडिविजुअल सल्फर रो ऑक्सीडेशन नंबर तुमको पचारिबी तुमे कोन उत्तर दबो टर्मिनल रो केते आउ मझी सल्फर उडा केते आई एम श्योर प्रवासी शिशना मुह खोलु ना किंतु अच्छंती ना प्रवासी ना आउ श्रावणी निश्चय अच्छी श्रावणी अच्छा यस सर हाँ जो मैंने नुआ प्रथम करी जॉइन कल से माने मन उणा करनी हे जीवो तुमर हे जीवो तुमे 2.5 घंटा रही परचो माने तुमर निश्चय हो सेटा टेस्ट 2.5 घंटा जदी बसी परचो शुणा तुम इच्छा हो डेफिनेटली तुम हम टे अधिका परिश्रम करा किए कह विस्मय कह तुम कहीं स्वयं हाथ टेकुन सर टर्मिनल -1 मझिरे सब तो 0 यस तू तो जी मु तो से सो एपटे तू सब गुडा तू तो जी से गुडा सब 0 ये तो ऑलरेडी -1 पाई से अन्य पाई सोडियम दीटा सोडियम रु गोटे सोडियम एपटे देछि गोटे सोडियम एपटे देछि ऑलरेडी -1 रे अछि एपटे तो किछि हरेलानी तेणु से -1 एवं मझी 3टा 0 सो -2 5टा जदि शेयर करेंगे ताले भाग पड़ला -2/5 किंतु प्रत्येकंकर -2/5 नुहे मझी 3टा 0 आउ शेष दीटार -1 लेखा सेमती गोटे इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल अछि धर Br3O8 डाई ट्राइब्रोमीन ऑक्टोक्साइड तार जदि एक्स मेथड रे बाहर करिवो तुमे बाहरिवो कोन ना ब्रोमीन रो 3x - 16 = 0 हेले x बाहरिवो 16/3 माने गोटे फ्रैक्शन बाहरिवो
3 पंचा 15 5.3333 किंतु तुम स्ट्रक्चर देखले सेमती फ्रैक्शनल केबे मिलेनी स्ट्रक्चर जदि मु तुमको कर देबी जोटा तुम आराम रे करि परिबो परवर्ती काल रे तेणु ब्रोमीन ब्रोमीन मान भितर कोवेलेंट बॉन्ड अच्छी सिंगल बॉन्ड अच्छी प्रति ब्रोमीन मझी ब्रोमीन टा 2टा ऑक्सीजन को लगी टर्मिनल ब्रोमीन 3टा ऑक्सीजन को लगी मिसई देले हे जीवो कोन Br3O8 किंतु सबु ब्रोमीन रो बाहर कलो इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन नंबर केते करला participants where is the participants ଦଉଛନ୍ତି हां कहले देखिबा ହଁ 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 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ପାଣିଟା ଏଇ ପାଖରେ ए श्रावणी तुम माइक्रोफोन बंद करो माइक बंद करो श्रावणी हाँ कहलो स्वयंजीत सर खड़ दिटा तुम माइक्रोफोन रोबोट हो जाउछ तमे तमर माइक्रोफोन सुबुनी विस्मय को सर टर्मिनल रो +6 मझिटा +4 से कहूची टर्मिनल एटार +6 मझिटार केते 4 +4 करेक्ट कहना ये ब्रोमीन तू तो जे मु तो से मझिरु केवल एई 3टा डबल बॉन्ड पई दीटा लेखा 6टा इलेक्ट्रॉन हरइबो ऑक्सीजन को सो +6 ये भी अवस्था सैया 6टा किंतु एठी तू तो जे मु तो से एपट आडुनी किछि नै किंतु ऑक्सीजन आडु एठी दीटा एपट दीटा ए डबल बॉन्ड रे दीटा हरइबो से डबल बॉन्ड रे दीटा हरइबो 4टा हरइबो +4 तेणु +6 +4 +6 by 3 एटा हलानी 612 16 by 3 एटा एवरेज बारुछ एमती गोटे इंटरेस्टिंग एग्जांपल अछि तुम जानो CrO5 तुम ताकू बेले बेले क्रोमियम पेंटॉक्साइड कहि दबो किंतु एक्चुअली इटा नॉर्मल ऑक्सीजन नाही काहे कि जदि x मेथड रे करिवो x - 10 = 0 x = +10 ये नामुमकिन जे जो कहउतलो ये एवरेज नो नामुमकिन काहे कि तुम परवर्ती काल रे जानिबो जे क्रोमियम टा ग्रुप 6 रो तार 6टा इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल रे 4s1 3d5 3d जदियो वैलेंस सेल नुहे किंतु प्रैक्टिकली सेटा वैलेंस सेल से भागनीय वैलेंसी रे कंपाउंड फॉर्मेशन रे n-1d ऑर्बिटल्स भागनियंती आमे परवर्ती काल रे जानिबा सो गहम गोटी गणता टोटल 5टा युक्त 1 6टा इलेक्ट्रॉन अछि भाग नवा पई +6 विथ मैक्सिमम जेमती ग्रुप 6a रहितला ऑक्सीजन फैमिली रो सल्फर रो +6 सेमती क्रोमियम रो मध्य +6 रो अधिक हाई पारिबो नाही ताको टाणी ओटा डिग्री एटा +6 कर दबो तुम केम जानिबो स्ट्रक्चर जानले तुम रैशनलाइज करि परिबो काहे कि क्रोमियम रो +10 हला नहीं काहे कि +6 हो नहीं सकता +6 से ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि एठी दीटा पेरोक्सी लिंकेज अछि दीटा पेरोक्सी लिंकेज गोटे नॉर्मल ऑक्साइड तो हिसाब करो क्रोमियम केतना इलेक्ट्रॉन हरइबो एठी गोटे एठी गोटे एठी गोटे एठी गोटे एठी गोटे एठी गोटे सो +6 हबो ही हबो एवं एठी -1 एठी -1 ए जे तू तो जे मु तो से -1 -1 एठी -2 तेणु मु जदि लिखि दी थांती CrO2 एटा गोटे न्यूट्रल मॉलिक्यूल ओ नॉर्मल ऑक्साइड गोटे पेरोक्सी दीटा तेणु तुम x मेथड रे सक्सेसफुल हे जानतो x -2 गोटे पेरोक्सी को 2 माइनस ले दीटा को -4 = 0 x = +6 आ गोटे हला ब्लीचिंग पाउडर को माने बुझुचो मु टिके फास्ट जाउची किंतु डजंट मैटर आमे समस्त को पई 10 दिनिया प्रोग्राम करूचे हार्ड वर्किंग पिला को पई डजंट मैटर जदि किछि बहुत बहुत मोनोटोनस लागे तमे जॉइन करिवो निकालठू नथिंग टू वरी
heaven is not going to fall. तुम भाई अल्टरनेटिव सब रही बुझिल तो आयुष्मान बुझिल प्रवासी प्रश्न ना प्रीतम बुझिल अरे बुझिल कि नहीं स्वयं बुझिल आज्ञा सर ब्लीचिंग पाउडर जोड़ा आम यूज करू सेटा हला CaOCl एतरे दी प्रकार आयन अछि नेगेटिव आयन दीटा गोटे हाइपोक्लोराइड आयन गोटे क्लोराइड आयन एटा कहते हाइपोक्लोराइड आयन तेणु तार जदि एवरेज बाहर करता 2x मेथड रे एटा भूल बारी सॉरी हाइपोक्लोराइड एटा हला क्लोराइड एटा -1 किंतु एटा हमकु जेहेतु एटा पॉलीएटॉमिक आयन ताको अलगा करिया पड़िबो सो एक ऑक्सीजन टा -2 क्लोरीन टा बाहर करिया पड़िबो x इज इक्वल टू -1 कारण एटा होल आयन टा पॉलीएटॉमिक आयन -1 सो x बाहरिबो +1 सो हाइपोक्लोराइड आयन रे क्लोरीन होची +1 तेणु आम जदि 2x नहीं जीवा से 0 बाहरिबो 0 केही ना कैल्शियम रो +2 -2 +2x इज इक्वल टू 0 हले x इज इक्वल टू 0 बाहरिबो किंतु 0 वाला केही ना +1 वाला गोटे अछंती हाइपोक्लोराइड आ क्लोराइड से गोटे अछि तेणु आमको देखियो पड़िबो धीरे धीरे इवेन आमर जो FeS2 गोटे अछि आको कहंती फूल्स गोल्ड बोकांक सुना सुना भलिया देखा जाए किंतु सुना नुहे एटा गोटे मिनरल आयरन रो गोटे मिनरल जो थ्रू एक्चुअली आमे सल्फर डाइऑक्साइड तयारी करू तापर सल्फ्यूरिक एसिड करू सल्फ्यूरिक एसिड करिवारे एटा सहाय्य करे आयरन रो ओर नुहे एटा आयरन रो गोटे मिनरल बट एक्चुअली यूज हुए ताको सल्फ्यूरिक एसिड करिवारे तो एठी जे कोनसी गोटे साधारण पिला एठी कहबो एठी +4 सल्फर टा नॉर्मल सल्फाइड किंतु तुमे जानि परिबोनी एठी कोन जेहेतु आयरन टा चल जोजता देखाए +2 देखि परिबो +3 देखि परिबो तुमे जानि परिबोनी एटा कोन एठी ना गोटे गोटे एवरेज कोन देखिबो आयरन तो गोटे आयरन एटम रे एवरेज केमती आयरन रो गोटे डिस्टिंक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रहइबो आइदर +2 नोन +3 तेणु एठी जाना पड़ जिवो सल्फर टा एठी जदि अवश्य आयरन टा +4 स्टेट को जाई पारिबो हम परवर्ती काल जानिबा आयरन टा +6 पन जाई पारिबो तो +4 काहे न होबो कोटे लोक जानिबोनी केमती किंतु एठी सल्फर टा पॉलीसल्फाइड तेणु एठी आयरन टा +2 स्टेट रो अछि FeS2 रे एटा पॉलीसल्फाइड S2 एटा +2 सल्फर टा -1 स्टेट रो अछि एवं आयरन टा +2 स्टेट रो अछि एटा जानि रखिबा उचित सेटा ऑलरेडी स्टडी हेछि सो एथरे मु तुमको देखे दूची आज सारिली एठी तुमको दीटा फाइल दे देबी तुमे ताकू प्रैक्टिस करिवो जे अधिका प्रैक्टिस करिवो जे कम बाछी प्रैक्टिस करिवो दिस इज अप टू लेफ्ट टू यू देखो ए चैप्टर टा जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर हमें सबु इवन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रे मध्ये बाहर करि परिवो देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एटा होची एसिटिक एसिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करके एक्स मेथड रे बाहर करि परिवो किंतु सेटा किछि लाभ नै एक्स मेथड रे 0 बाहर एसिटिक एसिड रो किंतु जो बॉन्ड कर दो सी रे तीनटा हाइड्रोजन सी बॉन्ड एवं सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड OH करिवो सेही मेथड रे कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन तो एटी कार्बन कार्बन टा -3 ए कार्बन टा +3 तेणु +3 -3 दीटा को मिसे कि 2 रे हरिले 0 आसुची किंतु दीटा कार्बन रो अलगा अलगा एटा -3 एटा +3 सेमती एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ताकू मध्य तुमे स्ट्रक्चर ड्रॉ करिकरी प्रति एटम रो ऑक्सीडेशन नंबर बाहर करि पारिबो सो इतरे हमें सब हां एटा देखो कार्बन आकु कहंदी कार्बन सबऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन सबऑक्साइड कार्बन संख्या अधिका थिले ऑक्सीजन थारु सब वर्ड यूज हुए सबऑक्साइड इतरे एक्स मेथड रे करे +4/3 आसु किंतु स्ट्रक्चर जे ड्रॉ कर दबो सी पूरा ट्रेन भलिया डबल बॉन्ड अछि लास्ट को एपटे ओ सेपटे ओ सो एटा तू तो जे मु तो से मझीटा 0 एवं ए टर्मिनल +2 से टर्मिनल +2 केवल ऑक्सीजन को हरेबे तेणु हिसाब कला को +4/3 आसुची किंतु प्रकृति रे मझीटा 0 एटी +2 सेटी +2 तो बाकी एटा गोटे ट्राइआयोडाइड आयन रे हरची -1/3 किंतु एक्चुअली यू नो यार तू तो जे मु तो से 0 0 गोटे से को डेटिव बॉन्ड प्लस माइनस अच्छी ए माइनस अच्छी मतलब डेटिव बॉन्ड एठी एटा डेटिव बॉन्ड
तेणु गोटाकर -1 हेले आमे एटा परवर्ती काल रे जानिबा जे सेटा भाग पडुची -1/3 तार स्ट्रक्चर टा मु परे कहबी एटा तुम क्लियर हे नथिबो वर्तमान समय नाही बाकी सब गुडा को मु डिस्कस करि सारिची आजिकार कार्यक्रम एठी शेष हला पाखा पाखी 2.5 घंटा हेला तुमे आयोनिक इक्वेशन प्रैक्टिस करिवो ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर मास्टरी आनिबो काली आमे जिबा कोठी को ना बैलेंसिंग इक्वेशन बाय आयोनिक इक्वेशन को बैलेंस करिवा सिखिबा भिन्न भिन्न मेथड रे बेसी मेथड नै जोड़िए मेथड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और मॉलिक्यूलर इक्वेशन को बैलेंस सिखिबा तापरे अल्प टिके समय नबा विभिन्न प्रकार नॉन रिडॉक्स रिएक्शन को रिवाइज करिया पई देन मूल द्वार आरंभ करिवा मोल कांसेप्ट तरतर हबानी बाय अच्छा जो माने जो बंधु माने जो बालक बालिका माने डायरेक्टली यूट्यूब रे देखि चंती बा देखिबे बा एबे देखुचो मे बी 5 दिन परे सब्सक्राइब करिनो एंड बेल बटन को बटन ये करो जो माने इवन जूम रे देखिबो से माने रिवाइज करि कि जानि कि जाओ एवं सब्सक्राइब करियो को जाओ जदि सब्सक्राइब करिनो बाय बाय सी यू टुमारो मॉर्निंग एट 6:30 थैंक यू सर।